ये प्रोजेक्टर नहीं चल रहा। Okay. Good afternoon, friends. So today is the first class of this geography optional. So we will be today class. What we will do, we'll divide it into two parts, and it is we'll just try to keep it more towards a introductory part of geography. Where we'll do what we'll chart out the strategy of how we'll be doing, and essentially, if you talk about in the last part of the class, I will also give you a basic introduction to the topic which will be starting tomorrow, that is climatology. Okay. So, like general things and the syllabus introduction of the topic of climatology. हेलो टेम्परेचर थोड़ा सा और कम कर दो. So, when we talk about geography, I must say that what goes on in the market, the type of rumors that are in the market, you people are one of the bravest civil services aspirants who are sitting here. Because if you are aware of the market trends, most of the people will say that geography doesn't gives you good results. सुना है ये? बहुत सारे सीनियर्स ने बोला होगा कि क्यों सर ओखली में दे रहा है. And essentially, to some extent, they are true also. There is no denying the fact that geography, if you look into more specifically after 2000 or from 2012, geography hasn't produced the same type of results which geography used to produce before 2012. ठीक है. 2012 से पहले का सीन ये होता था कि एवरी ईयर इन टॉप 20 रैंक्स एटलीस्ट 4 तो ज्योग्राफी के होते थे. इट यूज्ड टू बी द सीन. So the question arises, what actually changed in geography, and what has been one of the reasons for the contemporary times we see that there is still geography में अभी भी results आते हैं, and if you look into it is the second highest in terms of the total number of people getting selected from the optional. So geography is in terms of that, still in terms of total numbers, it is second highest. And like this year also you saw that there was rank 4, rank 12, uh, there were others 30, 41, 44. So there were good results. It is not like that कि results नहीं है. But एक general perception इसलिए बन जाता है, the primary reason for this kind of perception is that the failures in geography has been quite high. ठीक है. Now what has happened, you can understand the golden period of geography was the first decade of the 21st century. That was the golden period of geography. And there were reasons for that also. Like for example, if you go back into the previous year questions, किसने किसने देखे हैं previous year questions? It is something which is the key for the examination. So what we find, देखा होगा, if you go back to 2008, 2009 तक in fact, देखा है पेपर 1 में एक मैपिंग भी होता था 60 मार्कर्स का. ठीक है. उस मैपिंग का सीन ये होता था कि द लिस्ट विच टीचर्स यूज टू गिव अस, उस लिस्ट को प्रिपेयर करके चले जाओ. 100% है कि उसमें से 9 या 10 एंट्रीज मिल जाएंगी. ठीक है. और वो 60 मार्क्स में से आपके 50 मार्क्स एकदम सिक्योर्ड, वो कहीं नहीं जाने वाले. ऑल्सो यू वुड हैव सीन दैट in the paper what used to happen, there used to be 60 markers. देखा है. So आपको जो total number of questions लिखने होते थे, they used to be generally less. ठीक है. And in such a scenario, जब number of questions less पूछने, कम पूछने, तो tell me from year to year
will UPSC be able to explore the entire syllabus? ऐसा हो सकता है? मुश्किल होगी, बिकॉज यू आर आस्किंग लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दैट होता यह था कि when we used to prepare, you had to prepare one topic which was geomorphology. If you look back into the previous year questions, tell me, हर साल एक 60 मार्कर होता था कि नहीं होता था? Every year. And the type of questions, if you see, it used to be like plate tectonics, how plate tectonics theory is an improvement over continental drift theory, direct questions, isostasy difference between Airy and Pratt, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस, एंड दैट टू 60 मार्कर्स. दैट मीन्स इफ यू हैव अ वेरी गुड रट्टाफिकेशन एबिलिटी, what will happen? You will be doing very, very well in the examination. Same thing was with respect to climatology. And the third topic which we generally used to prepare was oceanography. So ये 3 सेक्शन ए से प्रिपेयर कर लिए, जिसमें से हमें 2 चॉइस बेस्ड क्वेश्चन पक्का मिल जाने थे. और क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, यू नो, when the paper is more straightforward, the chances that your answer will be matching with the model answer the examiner has will also be very high. ठीक है. So that means in general you will get very, very good marks. ठीक है. So that used to be the trend for section A. सभी लोग यही प्रिपेयर करते थे. फिर then coming to section B of the paper, in section B of the paper, one topic which everyone used to prepare was models, theories and laws in human geography. So if you look back into the previous year questions, हर साल एक क्वेश्चन 60 मार्कर 100%, एक थ्योरी 100% गिवन थी. ठीक है. तो इसका मतलब है पेपर 1 में आपने 4 ये टॉपिक प्रिपेयर कर लिए, तो you were assured that you will be able to go to do the all this your choice based question. 3 करने होते थे, you know. ठीक है. उसमें से कंपल्सरी पेपर 1 में एक आती थी मैपिंग, जिसके बारे में मैंने अभी बताया. इट वाज वेरी, वेरी हाई स्कोरिंग. देन सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 बचता है, विच वाज कंपल्सरी. यू नो, क्वेश्चन नंबर 1 and 5 आर कंपल्सरी. ठीक है. उसमें देयर वर टोटल यूज टू बी, उसमें भी पहले क्या होता था, देयर यूज टू बी 5 क्वेश्चंस दे यूज टू आस्क, एंड उसमें से आपको 3 करने थे, उसमें भी चॉइस देता था. ठीक है. एंड दे यूज टू बी द 20 मार्कर्स. आपने थोड़ा भी ज्योग्राफी इफ यू हैव स्टडीड, व्हाट विल हैपन, यू विल गेट योर 3 शॉर्ट नोट्स, जो आसानी से आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो. ठीक है. तो दिस वाज द ट्रेंड ऑफ पेपर 1. डोंट यू थिंक ये काफी इजी है? इतना ही अगर प्रिपेयर करना है, और मुझे पता है, it becomes literally quite easy. And that is one of the reasons geography was one of the preferred subjects. Also, because you'll see that in recent times, 21st century mein, the number of engineers coming for civil services examination has so much increased. So it is in general, you know, कि there was the period of Nehru Manlobis model, और उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने काफी इन्वेस्ट किया, बहुत सारे कॉलेजेस बन गए. 1991 में प्राइवेटाइजेशन आ गया, उसके बाद कॉलेजेस की भरमार हो गई. ठीक है. और उससे बहुत सारे इंजीनियर्स निकलने लगे, और ऑब्वियसली हम जॉब्स तो क्रिएट कर नहीं पाए ऑन द सेम लाइंस. तो बेरोजगारी में अब क्या कर सकते हैं, चलो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं. So the number of engineers actually opting for civil services increased. For engineers, geography is very, very natural. In general, for people belonging to science background, geography is very natural to them. Because in geography, everything is based upon certain theories. We will see that even human geography, you will see that it is based upon theories. ठीक है. So what happened? बिकॉज ऑफ दैट इसमें नंबर्स बढ़ने लगे. एंड इंजीनियर्स की एक खास बात होती है,
दे नो बेसिकली सम फ्यू थिंग्स, रिवर्स इंजीनियरिंग उसको अच्छे से आती है। उसके अलावा उनको पता होता है एकदम फोकस्ड वाली तैयारी कैसे करनी होती है, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ वो लास्ट में ही पढ़ाई की होती है, तो वो चूज करके कौन से टॉपिक्स करके जाना है, दे नो दिस वेरी वेल. So because of all these factors, what essentially happened was that in geography the number of people increased. Even paper 2 का अगर देखोगे, if you look into the previous year questions of paper 2, you will be in general finding that there used to be very very straightforward questions like classification of Himalayas, like how the Himalayas were formed, Indo-Gangetic plains, monsoon, एकदम सीधे सीधे question. And in such a scenario, paper 2 is very very useful for your GS also. Prelims may be बहुत useful है. For example, if you have seen this year itself, there were more than around 30 questions, more than 30. In fact, what I calculated, it was around 34 questions, which belong to your environment and geography part. Geography or environment, mein, there is lots of overlapping. So again, it was very natural for the people to choose geography as an optional, क्योंकि पेपर 1 ही था जो अलग से पढ़ना था mainly. And there also it was not so much tricky, it was very straightforward. In such a scenario, it used to give very very good results in geography. But there was a change. And change हुआ, यूपीएससी के अंदर बहुत सी रिपोर्ट्स आने लगी. इंटरनल रिपोर्ट्स पर्टिकुलरली अगर बात करें तो जो लाल बहादुर शास्त्री जो एकेडमी है वहां से रिपोर्ट्स आई कि द टाइप ऑफ पीपल यू आर सेंडिंग, दे आर अनट्रेनेबल. बिकॉज होता क्या था, इन सच टाइप ऑफ पेपर द पर्सन हु हैज ग्रेटर रट्टाफिकेशन विल डू वेल. एंड टेल मी हु विल बी एबल टू डू ग्रेटर रट्टाफिकेशन? कैन आई से बाबा लोग जिनका अटेम्प्ट्स काफी ज्यादा हो चुके हैं. So by the time you'll reach your third, fourth attempt, you will have mucked up everything very properly. So such type of students generally used to get more selected, and essentially once they reach there, trainability was very less. So there was a type of reform introduced within UPSC where they changed the nature of the paper. Now if you look into the paper, you have to answer, पहले कितने थे? You had to answer total 6 questions. Remember, 3 इधर के करने थे और 3 choice type. So 3 compulsory और 3 choice type plus 1 map work. इतने ही question करने होते थे. So total 7 questions you had to attempt. Now in the contemporary scenario, how many questions you have to attempt? 19 questions. Total there are 19 questions which you have to write. In 3 hours, 19 questions. जब मैं टेस्ट के डिस्कशन करता हूं तो यू कैन इमेजिन कि वो केवल 19 क्वेश्चन डिस्कस करने में इट टेक्स मोर देन, इफ यू टॉक अबाउट 4 आवर्स, टोटल उससे ज्यादा लग जाते हैं. अगर पूरा पेपर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं अगर वो पूरा डिस्कस करें तो यू कैन इमेजिन कि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट इट विल टेक होल लॉट ऑफ टाइम. So it takes more than 5 hours actually. So what has happened now? The time for your thinking has become very very less. आपको बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं है. So you have to be prepared and you have to be well prepared. So this is one change which has taken place. Second thing which has happened is when they are earlier they could ask only 6 questions. ठीक है. एंड उसमें एक दो जो चॉइस वाले जोड़ दो तो मैक्सिमम इट कैन गो टू 8-9 क्वेश्चंस जो पूछ सकते थे वो. दैट मींस दे कुड आस्क यू 8-9 टॉपिक्स. ठीक है. नाउ 19 प्लस जो बाकी चॉइस में आप छोड़ रहे हो, इट इज मोर देन 28 एक्चुअली. सो दे कैन आस्क यू इन वन पेपर 28 टॉपिक्स. So UPSC got the liberty to now cover the entire syllabus. ठीक है. And this entire syllabus they used to now they are used to covering, and they are asking from wide variety of questions they are asking. So जो पहले वाला फंडा होता था
that we used to prepare geomorphology, climatology, oceanography, अब वो नहीं चलने वाला. Because suppose I choose question number 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सपोज एक क्वेश्चन मुझे जियोमॉर्फो का मिल गया, एक क्वेश्चन मुझे क्लाइमेट का मिल गया, बट एक आ जाएगा बायोजोग्राफी. So it is the type of combination they are putting where you'll have to prepare the entire syllabus. ठीक है? So this is one big change which has happened, and that has actually made the preparation little bit difficult. ज्योग्राफी में देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. कोई अगर बोलता है कि ऐसा नहीं है तो ही इज लाइंग. एंड ज्योग्राफी सिलेबस इज बिगर. दैट मेक्स द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी एसेंशियली बिगर. अदरवाइज ज्योग्राफी भी एक साइंस की तरह है. सो यू नो साइंस के सब्जेक्ट्स इफ यू हैव सीन like physics, chemistry, all these are very big subjects. It takes whole lot of time. So it is like a science. So that is one thing which essentially happens in geography today. So what they did in 2008, if you are aware, there was change in syllabus. Syllabus को change कर दिया यूपीएससी ने, and whole lot of new topics were added in 2008. Because that year first time they added new topics, generally there was not much change in the trend. But from the next year itself, 2009, from here, I call it as the watershed year. This is the watershed year in UPSC preparation. From here, everything began to change. And they started to ask on lots of areas which they had never asked before. Such type of questions. And even the questions from biogeography, environment geography, so many areas of perspectives in human geography, other economic geography questions, जो कभी कोई पढ़ता ही नहीं था. It used to be like that. And in such scenario, the paper generally धीरे धीरे change हुआ, although 2009 में बहुत drastic change नहीं था, but still it began to change. The biggest change came in 2012. 2012 on paper, I think that it is still one of the most difficult paper that was asked. And what happened? अभी के लोगों को थोड़ा कम difficult लग सकता है, because you know पेपर आ गया, क्वेश्चन पूछ लिया है, तो नेक्स्ट ईयर से टीचर्स ने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया. But for the students of that year, it was actually literally very difficult. The scenario was such that it was very difficult to find, क्योंकि इस समय तक दो ऑप्शनल होते थे. You might be aware from 2013 there was another change where only you had to take one optional. So 2012 was a scene where it was difficult to find a combination of two optional, pubad and geography. ये सबसे पॉपुलर ऑप्शनल होते थे, pubad and geography. इस कॉम्बिनेशन से टॉप 100 में केवल दो लोग थे. दैट वाज द सीन. एंड देयर वाज दोनों जो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस थे, दे फेल डाउनवर्ड्स. देन केम 2013. This is on date the most difficult paper which was asked. So the trend which was here, it continued. Although there was little bit people were more prepared, but still it was very not very good. फिर क्या होता है? 2014 में यूपीएससी को थोड़ी सी दया आई, and they asked a comparatively easier paper. Compared to the last years, there was improvement. But again, I am saying, if you compare कि यहाँ तक क्या हो रहा था, it was very low. 2015 आता है, again the paper becomes very difficult, and what happens? The marks and the selection rate again went down. 2016 there was little recovery. 2017 again there was a better recovery. 2018 there was even a better recovery. तब से recovery में ही है. 2021, if you look into, it has been a very very good result for geography. ठीक है? So what was actually happening in these years, which after here there was a recovery.
सो देखो, व्हाट वाज हैपनिंग कि यहां पर जो लोग पढ़ा रहे थे, द टीचर्स हु वर टीचिंग हियर, वो कौन लोग थे? जिन्होंने अपनी तैयारी इस पैटर्न में की थी। ठीक है, तो उनको क्या आता था? उनको आता था जियोमॉर्फोलॉजी, उनको आता था क्लाइमेटोलॉजी, उनको आता था ओशनोग्राफी और मॉडल्स एंड थ्योरीज. So they used to literally teach these four topics, and they used to take 70% of the time in teaching these four topics. इसके अलावा there are total 16 topics in the syllabus, and they were never paid lots of attention. But UPSC had changed the pattern. So because of that, what will happen? अगर क्लास में नहीं पढ़ाया गया, what will happen? Can I say, पहली बार जब एग्जाम में जाओगे, मेंस लिखोगे, तो you will be surprised. You will be surprised. So students got surprised. अब उनको समझ में आ गया कि classes were not good. The promises which were made, they were not good. Then essentially next year they will start exploring. There is no one who could guide them essentially. So basically क्या हुआ? They will have to look towards books. So some people will tell you कि ये वाली बुक पढ़ लो. Like for example सविंदर सिंह की बुक्स आती हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड वगैरह वगैरह. तो किसी ने सजेस्ट कर दिया कि ये पांचों बुक पढ़नी पड़ेंगी, बायोजोग्राफी, एनवायरमेंट जोग्राफी, ये पांचों बुक पढ़नी पड़ेगी. उनके बुक्स को देख लो तो उसमें 5 साल तो अकेले उसी में निकल जाएंगे. दैट वाज द काइंड ऑफ सीन. बुक्स की प्रॉब्लम ये होती है, these books are not written from the exam point of view, they are written more from the academic point of view. So there is lots of information in the books, but all this information is very much scattered all over the book, and there are no interconnections which are established. These interconnections, these understanding of the interconnections are essentially the key which help you to solve the questions. Every year I get so many students who come to me and tell me that sir, I have done self preparation, मैंने book से पढ़ा है, I have studied this book, that book, but I am unable to solve the paper, I am unable to solve the questions. Even after so much extensive reading, what happens is when I try to pick up the questions, again I don't understand how to answer them. How many of you have done some reading and have felt like this? किसी ने किया है? You can see here also people are sitting. So why this happens? Because the books are not designed from the exam point of view, they are more designed from an academic perspective, more from a research perspective they are designed. So वो जो linking element is missing, and you don't know what is essentially very important and what is not very important, and that makes it difficult to consolidate the reading which you have done in the books. So this was one of the biggest problem which the students were facing. They just एक तरह से you can understand कि like रशिया यूक्रेन में war चल रहा है, and right now what happened with Ukraine, West promise कि we will be there with you. ठीक है, फिर क्या हुआ? रशिया ने अटैक कर दिया. Where is West? Nowhere to be found. They are on their own. So it was very similar. Students were essentially on their own in the examination, in the preparation, and they didn't understand what to do. And this was the main problem they were facing. Ultimately, 2015 के में दिसंबर, in fact, जो period था वहां पर I opened guidance IS, and I had given exam till 2010. ठीक है, I had experience of this change which was coming. So as a student मैंने prepare किया था बहुत सारी चीजें, because I could see even in those years, for example 2010 में देखोगे तो there was a question which was asked in biogeography, floristic kingdoms. देखा है? There was one question on floristic kingdoms. So वो change जो था वो start हो गया था. उससे पहले बायोजोग्राफी में जाओगे तो दो ही तरह के क्वेश्चन होते थे, सॉइल पे और बायोम्स पे. ठीक है, but from there the change had started. So actually I had started to like prepare these areas as well. What I found
मैंने अपना स्टार्ट किया, फर्स्ट आई स्टार्टेड विद अ टेस्ट सीरीज। मैंने थोड़ा सा यूपीएससी लेवल के पेपर्स बनाए एंड एवरी वन वॉज ब्लैंक, किसी के 50 भी क्रॉस नहीं हो रहे थे। इट वॉज द सीन। ठीक है। देन आई स्टार्टेड माई क्लासेस, बोथ ऑप्शनल एंड वन ऑफ माई वेरी फेमस क्लासेस इज 500 प्लस, सुना होगा शायद तुम लोगों ने। तो 500 प्लस आई स्टार्टेड। सो 500 प्लस में मैं कंटेंट देने लगा, बहुत सारा कंटेंट देने लगा, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लासेस। बहुत भीड़ होती थी उसमें, बिकॉज इतने सारे सताए हुए लोग थे, और अल्टीमेटली दे यूज्ड टू कम। One problem initially I also faced was to convince people that the content which I am giving, it is actually much better, and you can even rely on those content, in that content. ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि दूध का जला जो है वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है। So they had been already cheated, so they were not in a position to trust any teacher. टीचर सेइंग कि मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है एंड यू जस्ट रिलाई, क्योंकि वो सुन चुके हैं ये बात, एंड दे हैड ऑलरेडी सफर्ड द कंसिक्वेंसेस ऑफ दैट। सो इनिशियली जो 500 के रिजल्ट्स थे, दे वर नॉट सो मच गुड टिल 2016। अगर मैं देखूं तो दो बैच हो चुके थे उस टाइम पर। दे वर नॉट सो मच, आई वुड से दैट नॉट सो मच गुड। सेम थिंग, रीजन वाज बिकॉज अगर मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं, स्टूडेंट्स हैड ऑल्सो देयर बैगेज, वो अपने बैगेज के साथ आ रहे हैं, एंड वो दोनों को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं, एंड अगेन if you're unable to consolidate, you'll not get good result. However, 2016 में कुछ अच्छे results आए, and they began to change the perspective. जो perception था, from there began to change. So there were so many students who got benefited, and they openly came and told that these classes benefited me. So next year, 2017 में, there were others who also ultimately believed, some of them believed, and they got good marks in geography. 2017 was the year after many years when people began to cross 300 plus. So in total there were 5 students who had crossed 300 plus, जिसमें से 4 मेरे students थे. And the cycle, once it starts, the cycle continues. So that has been the case of recovery. But still, abhi bhi, the thing is, why the impact which I wish I could have created in UPSC geography is limited, because कि अगर if you have to do GS, तुम लोग कहाँ जाते हो? Most of you, there is one coaching we all know, where everyone goes. ठीक है? And generally a tendency of the student would be कि दोनों चीजें एक जगह पे कर लेते हैं, GS भी वहीं पे कर लेते हैं एंड ऑप्शनल भी वहीं पे कर लेते हैं, बिकॉज इट विल बी इजियर, कंपैटिबल होगा, टाइमिंग में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सो दे विल जस्ट व्हाट दे विल डू, दे विल डू द क्लासेस देयर जहां पर वो जीएस बेसिकली कर रहे हैं। अगेन, द लेवल विच इज बीइंग टॉट देयर, इट इज नॉट अप टू द मार्क टू यूपीएससी। एंड वंस योर फाउंडेशंस बिकम वीक, एक उस पे स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाना, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। So this has been the case which geography students have been facing. ठीक है? So what I was just trying to here explain you, that there will be lots of perceptions about geography as an optional in the market. ठीक है? ज्यादातर perceptions किसने बनाए हैं? The people who have failed. उन्हीं के perceptions है ये। जिनको सक्सेस मिला, दे विल नॉट टॉक अबाउट लाइक दिस, दे विल डेफिनेटली से इट हेल्प मी, इट हेल्प मी अ लॉट, आई इंप्रूव्ड, मैंने ये गलतियां की थी, सो नेक्स्ट ईयर व्हाट आई डिड, आई इंप्रूव्ड अपॉन दैट। लाइक देयर वाज 2018 में देयर वाज रैंक 3 जुनैद, ही गॉट सेलेक्टेड कंसेक्यूटिवली, 2 बार उसका सिलेक्शन हुआ, दोनों बार ज्योग्राफी में मार्क्स कम थे। ही केम टू मी एंड आई टोल्ड हिम कि वन मिस्टेक विच यू आर डूइंग इज यू आर नॉट focusing on human geography. His human geography was weak. So why don't you change the strategy this year and you focus upon human geography? He did that. उसी साल उसके 321 मार्क्स आ गए। So ultimately, उससे पहले he was also thinking कि इस बार geography छोड़ देते हैं, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। He was also confused, like many other people. But he was able to find out where he was making the mistake. And he improved upon that. Next year, it gave him the results. ठीक है? So it is all about
सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट के लिए? इट इज द कंफ्यूजन. कंफ्यूजन इज द बिगेस्ट बैरियर दैट यू आर फेसिंग. जिसको पता है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, that person will have better probability of getting good marks and getting selected. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. I'll give you one example for this. Tell me, do we find that in general the students belonging to or those who have cleared exams like IITs, IIMs or other medical top levels exam, क्या उनका सक्सेस रेट बेटर है इन यूपीएससी? यस और नो? डेफिनेटली बेटर है. सो क्यों बेटर है? There are two again viewpoints. One is some people will say कि their mind is better, IQ is better. ठीक है? I really don't think so because I have dealt with both type of students. So really I don't think so. So what is better and why they have better success rate? Reason is very simple. Because उन्होंने अपने लाइफ में एक एग्जाम ऑलरेडी ऑल इंडिया लेवल का निकाला है. ठीक है? और जब आप आईआईटी और इन सब कोचिंग्स में जाते हो, many of you would have also attended those classes. One thing you will be finding that the teachers who are teaching, they are very good in their subject matter. उनको अपना सब्जेक्ट मैटर बहुत अच्छे से आता है. फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री का टीचर, मैथ्स का टीचर, कुछ भी पूछो वो बता देगा तुम्हें. ठीक है? तो वहां पर देयर वाज नो कंफ्यूजन. टीचर्स आल्सो न्यू कि ऐसे प्रिपरेशन करोगे, ये प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा सिलेक्शन. सो व्हाट हैपेंड, उन्होंने वैसे ही प्रिपरेशन किया. बहुत सिंपल तरीके से उनको पता था कि ये बुक लगानी है, एचसी वर्मा मुझे सॉल्व करनी है और एसेंशियली उससे मेरा फिजिक्स का काफी काम हो जाएगा. एंड दे डिड दैट. अल्टीमेटली दे गॉट रिजल्ट. तो रास्ता बहुत क्लियर था. देयर वाज लेस कंफ्यूजन देयर. ठीक है? सो दे already first hand experience a good success, and they knew that you don't have to do anything extraordinary. Extraordinary mein there is one extraordinary. That means ordinary things you have to do twice. So they understood this कि main challenge क्या होता है? Completing the syllabus is the main challenge. ठीक है? And they know this कि अगर मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया एंड इफ आई गो प्रिपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन आई विल डू वेल. तो उनका फोकस बहुत क्लियर है कि उनको इतनी ही चीजें पढ़नी है एंड दे विल स्टडी दैट एंड दे विल गो इनटू द एग्जामिनेशन एंड दे विल डू वेल. अ स्टूडेंट हु हैजंट टेस्टेड सच काइंड ऑफ सक्सेस इन द पास्ट, वो बहुत कंफ्यूज्ड है. क्योंकि यूपीएससी का हवा सबने सुना होगा कि अगर किसी से बोलो भी कि यूपीएससी की आप अगर एवरेज स्टूडेंट हो एंड किसी से बोलो कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहा हूं, तो पहले तो तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखेगा. बिकॉज द परसेप्शन इज यू हैव टू बी अ किताबी कीड़ा. यू हैव टू स्टडी 12 to 14, 15 आवर्स इन अ डे. मैं आज तक नहीं समझ पाया कि इतनी देर कौन पढ़ सकता है. आई डोंट थिंक एनीबडी कैन डू. ठीक है? केवल मोदी जी इतनी देर काम कर सकते हैं. So, very clearly, this kind of perception is there in the mind of the student because he hasn't tasted the success. So, उसको लगता है कि जब तक मैं ideal level पे preparation नहीं करूंगा, till then मेरा selection नहीं होने वाला. I cannot get selected. And one of the perceptions which will be there is, एक इंडिया में, you know, this perception is the more you will read, the more you will become intelligent. ये भी एक perception है इंडिया में. यही रीजन है यूल फाइंड कि वो मोटी मोटी घटिया लिखी हुई किताबें अभी भी बिकती हैं. ठीक है? दिस इज द काइंड ऑफ परसेप्शन दैट इज एसेंशियली देयर. सो व्हाट अ स्टूडेंट वुड डू, जैसे मैं था, आई ऑल्सो वॉज द विक्टिम ऑफ द सेम फिनोमिना. सो व्हेन आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर, समवेयर आई ज्वाइंड एंड वहां पर टीचर ने बता दिया कि ये 20 किताबें नाम लिखवा दी और सब खरीद के ले आया. उसमें से एक नहीं मिली थी, बाकी सब मिल गई थी, सब ले आया. और उसमें से अगले कुछ महीनों में उसमें से 3-4 पढ़ भी डाली. ठीक है? सो दैट वाज द काइंड ऑफ, उसने ये नहीं बताया टीचर ने कि एनसीईआरटी पढ़ो, यू गो थ्रू एनसीईआरटी.
दिस इज द प्रॉब्लम व्हेन यू डू योर क्लासेस इन रीजनल सेंटर्स, वहां पे टीचर्स को और भी कम पता है. सो व्हाट हैपेंस विद सच अ स्टूडेंट, ही इज कंफ्यूज्ड, उसको पता नहीं है कि बेसिकली रास्ता क्या है. ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, बट अगेन द सेम प्रॉब्लम कि कैसे करें. उसके दिमाग में एक परसेप्शन है कि बहुत पढ़ना होता है, बहुत पढ़ना होता है, एंड दैट इज ही इज ट्राइंग टू अचीव. बट उसको ये नहीं पता है कि कम पढ़ना होता है, उसी को कई बार पढ़ना होता है, सो दैट वो तुम्हें बिल्कुल दिमाग में रट जाए. बहुत सारे लोग दिल टेल यू कि फॉर यूपीएससी द डिफरेंस बिटवीन पीसीएस एग्जाम एंड यूपीएससी इज दैट यू हैव टू हैव मोर एनालिटिकल एबिलिटी. सुना है ये बात? ठीक है, ठीक है, टू सम एक्सटेंट द क्वेश्चंस आर डिफरेंट, बट अगेन द थिंग इज, for any analysis the first step is rectification. For any linking the first step is rectification. जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले मुझे बताओ, एबीसीडी रटा था कि नहीं रटा था, या फिर टेबल्स मैथ्स में रटे थे कि नहीं रटे थे. सो देयर वाज अ रीजन, एंड देन यू रीच टू द लेवल ऑफ एनालिसिस. नाउ व्हेन यू आर स्टडीइंग सो मेनी सोर्सेस, tell me, will you be able to mug up things? Will you be able to rectify? Definitely not. It will not happen. And this is the primary cause why the success rate in the other category of students, which is the majority category, is lower. यही सबसे बड़ा रीजन है, द कंफ्यूजन. सो जिसने इस कंफ्यूजन को ओवरकम कर लिया, who has cleared this confusion and is dead sure कि मुझे यही पढ़ना है, ये 4-5 कॉपियां हैं, this I have to finish, he will get through. Optional में we will be studying a very more detailed, सभी topics will be studying at a detailed level. 500 में I just cover 60% of the syllabus. Every year there is a story where students will come and tell me कि मैंने केवल वही 60% पढ़ा क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था. I didn't had the time. और उसी 60% पे I got very good marks. This is every year the case. 3 कॉपियां बनती हैं हर साल 500 की, और they just studied those 3 copies, but they studied multiple times and ultimately they got the results. ठीक है? So that is the key. So if you have come here, again same thing, we will be giving you lots of material, study material, there will be lots of study material. You will also have, इसमें कितने लोग हैं जो ऐसे वाले भी हैं जो एक परसेप्शन ये भी होता है, एंड ये मेरा भी, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन दिस कैटेगरी, हु थॉट कि पहले ऑप्शनल की क्लास कर लेते हैं, एंड क्योंकि दिन में ऑप्शनल की क्लास हो जाएगी तो फिर उससे क्या होगा कि आई विल गेट द टाइम टू प्रिपेयर व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास, फिर जीएस की क्लास बाद में करेंगे. ऐसा है कोई? I was, for example, one of such thinking people, and I did my optional course. मेरे रूममेट ने बोला कि दोनों कर ले, फालतू में इधर उधर वरना टाइम वेस्ट करेगा, बट आई डिडंट लिसन. आई हैड कि नहीं नहीं मुझे बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज आई वॉज द सेम कैटेगरी, एवरेज स्टूडेंट, और जिसके लिए यूपीएससी समथिंग वेरी बिग. सो मुझे वो आइडियल चीज अचीव करनी थी, आइडियल लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे जाना था. सो आई डिड सो. उसकी बात मैंने नहीं सुनी. ही गॉट सेलेक्टेड दैट ईयर ओनली. उसी साल उसका सिलेक्शन हो गया. ही गॉट, अभी भी छत्तीसगढ़ कैडर मिल गया. ही इज आईएएस नाउ. अगले 2 साल तक मैंने एग्जाम ही नहीं दिया क्योंकि मेरी प्रिपरेशन जीएस की मुझे लगता था कि है ही नहीं. सो अगेन व्हाट वाज हिज पॉजिटिव थिंग कि उसने दिन में 2 क्लासें की. अब आप दिन में 2 क्लासें करोगे तो will you be able to actually read a book? You'll not have the time.
बहुत बड़ी बात होगी कि आप क्लास के नोट्स ही रिवाइज कर लो, ठीक है, ओनली दिस मच टाइम. इट इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग टू फुली रिवाइज द क्लास नोट्स ऑल्सो. सो ही डिडंट लुक इनटू एनी ऑफ द बुक्स. मैं बुक पढ़ता रहता था, ठीक है, इनफैक्ट काफी सारा ज्योग्राफी जो मैंने सीखा है उसको पढ़ा पढ़ा के सीखा है. बट essentially I, if you talk about, was reading so many books. He didn't used to read books. कहीं एक आध इधर उधर कुछ कुछ सविंदर सिंह के कुछ चैप्टर देख लिए, अदरवाइज नो. एंड व्हाट वाज द सक्सेस, उसी साल सेलेक्ट हो गया. एंड व्हेन यू आर ब्रेव आल्सो डेस्टिनी फेवर्स यू. ही वाज गोइंग टू गेट आईपीएस, एक सीट बढ़ गई और उसकी वजह से उसको आईएएस मिल गया. सो very important thing will be to control your emotions, because there will be lots of opinions in the market. So बहुत सारे selected students आएंगे and they'll tell you, if you read their interviews, they'll recommend कि ये book पढ़ लो, ये book पढ़ लो, ठीक है. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी इज वन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस, ठीक है. पर्सपेक्टिव्स के लिए एक किताब आती है आर डी दीक्षित, सुना है? कौन सा ऐसा स्टूडेंट है और कौन सा ऐसा टीचर जो इस किताब को रिकमेंड नहीं करता? मैं भी करता हूं, मजबूरी है. बिकॉज अगर मैं नहीं बोलूंगा, किताब का नाम नहीं बताऊंगा, तो ये पीपल विल थिंक कि इन्होंने किताब पढ़ी नहीं होगी इसलिए इनको नाम ही नहीं पता. तो आई ऑल्सो हैव टू टेल, ठीक है. नाउ आई गिव यू अ चैलेंज, मेरे क्लास नोट्स उठाओ एंड यू पिक अप आर डी दीक्षित, कंपेयर करो चैप्टर वाइज. यू विल फाइंड कि जो क्लास नोट्स, दे आर so much better. They're so much better designed in so much easy language, because this topic is very philosophical. कुछ समझ में नहीं आता. If you read from the notes, it is explained in a very common language, which is a dictation which I have done in the classes. ठीक है. बट हुआ क्या, मेरा ही स्टूडेंट मेरे से ही पढ़ा, क्योंकि फिलोसॉफिकल टॉपिक है, कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, इंजीनियर्स के तो ऊपर से निकलता है, ठीक है. तो एसेंशियली क्या हुआ कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है. बीइंग ह्यूमंस, वन ऑफ आवर टेंडेंसीज इज वी वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. और बहुत सारे टॉपर्स ने भी बता दिया है, कुछ लोगों ने बता दिया, सीनियर्स ने बता दिया, नहीं आर डी दीक्षित तूने नहीं पढ़ा तो तू गया. एंड अंडर दिस प्रेशर व्हाट विल हैपन, वो फिर लेके आया आर डी दीक्षित और पढ़ना शुरू किया. उसके पास बहुत अच्छे नोट्स हैं जिसको उसने नहीं पढ़ा, और पहले आर डी दीक्षित पे पहुंच गया. कंफ्यूजन जो दिमाग में था, जो क्लास में कुछ चीजें समझ में नहीं आई, दिस कंफ्यूजन फर्दर इंक्रीज्ड. सो व्हाट ही और शी डिड, बॉच्ड अप एवरीथिंग. And this is the thing which is there for almost every topic. There will be people telling you कि, like for example, geomorphology, Savinder Singh, there is a book, ठीक है, आराम से वो बुक आई थिंक 800-900 पेजेस की बुक है. There were some topics which were added in 2008 का जब चेंज आया, तो उसमें कुछ टॉपिक्स ऐड हो गए, लाइक स्लोप डेवलपमेंट, denudation chronology, channel morphology. Some of these topics were added, which are not covered in the normal Savinder Singh physical geography book. So many people will say कि जा करके उससे पढ़ो. स्लोप डेवलपमेंट उठाओ वहां से किताब से, उसको पढ़ने की कोशिश करो. आई यूज दिस स्टेटमेंट एवरी टाइम इन द क्लास. लाइफ की हर फिलॉसफी क्लियर हो जाएगी स्लोप को छोड़ करके. बिकॉज व्हाट इज द देयर इन द बुक, कट पेस्ट. डायग्राम कहीं और से उठाया, टेक्स्ट कहीं और से उठाया, कट पेस्ट कर दिया, समझाया ही नहीं है, लिंक किए ही नहीं है उन कंसेप्ट्स को. So again, what will happen? The confusion will further rise. So this is what you don't have to do. This is a challenge. The content you will be getting is the best content. किसी को अगर डाउट है, a scientific minded person will do what? He or she will compare करके देखेगा, and then he will deny or accept the whatever the statement has been made. ठीक है. इसका मतलब the biggest challenge will be what? The biggest challenge will be mugging up
that content, being highly consolidated in that content. ठीक है? This is the case of your preparation, which should be. So if you are joining guidance, this is essentially you have to promise me that you will do. You'll not run behind. जहां पर book के लिए कुछ पढ़ना है, I will tell you myself. For example, I'll tell you that some topics you read from geomorphology, physical geography book. I'll tell you myself. Chapter भी बताऊंगा कि कौन से chapter करने हैं. But उसके अलावा you don't need. अभी few days back, one of the students came and he told me कि सर मैंने रूपा पब्लिकेशन की मेड सिंपल वाली बुक्स पढ़ ली हैं, सविंदर सिंह पढ़ लिया है, ये बुक पढ़ लिया है, लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे. आई टोल्ड हिम वन वे इज, इन सभी बुक्स जो तुमने पढ़ी हैं उसमें से कोई एक सोर्स चूज कर लो, उसी को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, एंड यू विल सी कि आफ्टर सम टाइम यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो दिस इज व्हाट यू डोंट हैव टू डू. ठीक है? सो दैट इज वन थिंग दैट वी मस्ट नो अबाउट द स्ट्रैटेजी दैट वी हैव टू फॉलो. ठीक है? नाउ so what is if we talk about geography, about little bit, अब थोड़ा सा geography की बात करते हैं, एंड मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जनरली बात करने वाला हूं. what is giving you scores, how the marking is essentially being done. When I was starting to teach, and as I told you, when I was a student also 2009 and 10 में, I found one very interesting thing. And what was that interesting thing? That physical geography questions tended to become more difficult. पेपर उठा करके देखो 2009 से 2017 तक का, एंड यू विल बी फाइंडिंग फिजिकल ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं दे आर एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट. स्पेसिफिकली कौन सा टॉपिक सबसे डिफिकल्ट हो गया? जियोमॉर्फोलॉजी. ठीक है? सो इट एक्चुअली बिकेम वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो आई स्टार्टेड टू फाइंड कि if you look into human geography questions, they were actually comparatively easier to solve. ठीक है? So मेरा अपना एक थ्योरी बन गया, whether I don't know this theory is correct or not, but this was my opinion. What was basically the reason? My opinion was that there was someone who was the head examiner in UPSC. His specialization was physical geography, most probably geomorphology, and I wouldn't be surprised if someone like Savinder Singh himself was making the paper, because the type of questions which were being asked, it actually required a very very strong detailed understanding of the topics. And that was the reason I, as a student in my last years, I started to little focus more on human geography, and as a teacher I have try to make sure that human geography is area which we don't leave behind. Physical geography तो सब पढ़ाते हैं, ठीक है? Human geography is one area which very rarely people teach properly. So that is one thing you have to understand. So ये एक चीज हुआ. हालांकि there is a change in pattern again. ठीक है? What is this change in pattern? We find that from 2018, physical geography questions have become little bit easier compared to what they were coming into till 2017. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. If you look into the syllabus of geomorphology, there are two parts of geomorphology. One is the tectonic part of geomorphology. Second, if you talk about, is essentially the what we call it as the landform development. So there are two parts of geomorphology. इससे जो questions होते हैं they are easy. This area is very subjective. One statement Davis gives, landforms are function of structure, process and time. अब structure इतने सारे तरह के होते हैं, processes, variety of processes are there, time itself is a very controversial concept. So there is huge subjectivity in this area. You see the questions from 2009 से लेकर के 2017 तक,
Around 30 questions were asked from geomorphology during this period. Out of that, 24 were from here, and only 6 questions were from here. And in this 24 questions, they were actually very difficult. They were literally very difficult. However, अभी recent में क्या होने लगा है? You'll find every year they are asking one question of tectonic geomorphology. Like this year, अगर paper देखा है, if you have seen, there was question on how plate tectonics developed on the idea of continental drift and isostasy. ठीक है? So now every year they are asking one question. So physical geography 2018 से थोड़ा easy हो गया है. This means if I am going to give exam in 2023 or 22, what I have to do, I will focus on both 50% of time on physical geography and 50% of time I will be essentially giving in human geography. ठीक है? ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे चेंज करना है तो मैं फिजिकल ज्योग्राफी को 60%, क्योंकि इन जनरल फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है. ठीक है? बट ये किसी भी हालत में 40% से कम नहीं होना चाहिए. This should be at least the 40% of time total devoted time होना ही चाहिए. Now, from past 2 years, one trend more I am seeing. Because so many students come to me, they talk to me कि marks कैसे आए exam में. This year, there were number of students who got abrupt marks. ठीक है? Abrupt marks का मतलब है one is towards the high side and one is towards very low. So you can understand किसी के marks 78 आ रहे हैं, किसी के मार्क्स 82 आ रहे हैं. दिस इज वेरी वेरी लो मार्क्स. ठीक है? और यही स्टूडेंट पेपर 2 में स्कोर कर रहा है 140 प्लस. इन पेपर 1 दिस सेम स्टूडेंट इज स्कोरिंग दिस मच लो मार्क्स. सो अगेन, क्या रीजन हो सकता है? व्हाट कुड बी एसेंशियली द रीजन? आई टॉक टू देम विच क्वेश्चंस दे अटेम्प्टेड एंड एवरीथिंग. Out of, if I talked about 10 students who had such abruptly low marks, 8 of them were those who had attempted 2 questions from the choice type, 2 questions from physical geography. ठीक है? Now try to understand what is the main problem. Physical geography is very much like science, where the answer is fixed. If you have written that fixed answer, you will get marks. If you haven't written that fixed answer, you will not get marks, no matter how much you daydream, no matter how much you feel कि पन्ने भर दिए, you will not get the desired marks. Human geography में क्या होता है? If you know the concepts, फंडे पता है, at least 40-50% बेकार भी है तो मिल जाएगा. If you have used good examples, case studies, you will get even better marks. वहां पर ज्यादा सेफ्टी है. There is also some subjective questions are there also, जहां पे you might get them wrong. But in general, this was the trend. ठीक है? This again tells me that I have to focus a lot on human geography. Most of the students who are making the mistake in geography is that they neglect human geography. और वो उनकी भी गलती नहीं है. Where they are doing their classes, there they are neglecting this area. So you have to make sure कि ये नहीं छूटे. अब मैं अगर सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, तो what is the distribution? You know, in paper 1, we find that physical geography is almost 50%. 5 टॉपिक्स हैं फिजिकल ज्योग्राफी के, ऑल्दो वो बड़े टॉपिक्स होते हैं, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि उसमें 60% टाइम लगता है. देन देयर इज ह्यूमन ज्योग्राफी विच 40% सिलेबस का पार्ट है. देन
if you look into paper 2, in paper 2, physical geography actually, if you look into, is only one main topic of physical geography. कौन सा है? First topic, that is physical setting, 10%. There are some more topics of physical geography in the last topic of contemporary issues, जहां पे floods etc etc कुछ और topics mention है. तो physical geography is just 15%. And human geography, all other topics are कौन से हैं वो? Resource, agriculture, industry, transport, communication, trade, cultural setting, settlements, regional development planning, political aspects. All of these are what? They are human geography topics. So, very clearly, 85% of your syllabus is human geography. ठीक है? But preparation में कैसा रहा? People give 65 to 70% of the time for physical geography, and just you can understand 35 to 30% of the time to human geography. Tell me, नाइंसाफी है कि नहीं है? बहुत बड़ी नाइंसाफी है. And because your strategy is wrong, tell me, how can you expect that you will be doing well in the examination? Your strategy is totally wrong. So this is one thing which we will try to make sure that we will not do. We'll try to make sure कि हम समझें कि डिमांड क्या है एग्जामिनेशन की. ठीक है? सो एज आई सेड, 50-50% वेटेज होना चाहिए दोनों की प्रिपरेशन में. ह्यूमन ज्योग्राफी टेक्स लेस टाइम, इट इज इजियर, वहां पे फट्टे भी चलते हैं. सबसे अच्छी बात क्या है? देयर इज ह्यूज ओवरलैपिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विथ योर जीएस. What we will be studying, for example, here, so many of the things you can use in essay, so many examples, so many case studies you can use in essays. So it has more significance from your overall perspective of the examination than if you talk about the physical geography. इंटरव्यू में भी जाओगे तो ज्यादा क्वेश्चंस वो तुमसे ह्यूमन ज्योग्राफी के पूछेगा. So every stage of the paper you will be finding it has more weightage compared to if you talk about physical geography. Definitely physical geography prelims में थोड़ा सा weightage ज्यादा होता है within if you look into geography and environment की वजह से, but overall human geography has greater weightage. ठीक है? So I hope this thing you are clear with. किसी को इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है अभी. ठीक है? So that is basically what you have to essentially do. You will make sure कि your time allotment is equal. ठीक है? आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन में. Now there are two papers, that is paper 1 and paper 2. ठीक है? So paper 1 and essentially paper 2. Now if you just want to understand the difference between these, you should know little bit about geography. तो थोड़ा सा geography के बारे में बताता हूं. ठीक है? So you know what is geography? What is essentially geography? Can we say geography is study of earth as the home of humans? ठीक है? So geography is essentially what? It is the study of earth's surface as the home of humans. ठीक है? So very clearly we are not concerned about the full earth, we are concerned about the earth's surface. ठीक है? This we will see is the key of geography, that is location. We are more concerned in geography about study of space, location, geographical space, and home of the human beings. This theme in geography is represented as
we are more concerned about study of relationship between human and environment. ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, सो ये दो चीजों पर हमारा फोकस ज्योग्राफी में रहता है. ठीक है. इफ यू हैव रेड एनसीईआरटी, किसने 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 लिखा है, पढ़ा है एनसीईआरटी? वी ऑल्सो हैड द प्रिपरेटरी क्लास, सो उसमें कुछ लोगों ने तुम में से पढ़ा होगा. नाउ इफ यू लुक इनटू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सेज टू थिंग्स अबाउट ज्योग्राफी. One is that geography is essentially what? It is a spatial science. And second thing, it says it is an integrative science. So it is a spatial science and integrative science. ठीक है? So if we go back a long time back, and I'm talking about the 17th century, there was one very big philosopher, सबने उसका नाम सुना होगा तुम में से, and his name was Immanuel Kant. सुना है? A very, very tall figure in the knowledges. Immanuel Kant, very famous philosopher. So, before this period, knowledges were not segregated. Branches of knowledges exist नहीं करती थी. ठीक है? Knowledge सब लोग सब कुछ पढ़ते थे. But there was at the end of medieval period, beginning of modern period, there was a phenomena जिसको हम बोलते हैं Renaissance. सुना है? So dark ages in Europe was ending and Renaissance was beginning, and it was also an age of discovery. There was lots of discovery everywhere. So knowledge, information about every phenomena began to expand at multiple rates. At so much multiple rate, it began to essentially expand. इतना ज़्यादा information हो गया कि it was not now possible for a single person to study everything. ठीक है? So thus what was required? That there was segregation of this information into parts. ठीक है? तो उसको parts में divide कर दो. इसी तरह से subjects बन गए. So someone who was focusing on the study of non-living, laws of non-living, that became physics. Someone who was studying the non-living internal structure laws of the non-living things, that became chemistry. Living beings, biology. So likewise सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स बन गए. ठीक है? कांत वॉज क्लासिफाइंग दीज सब्जेक्ट्स. ही टुक द टास्क ऑफ क्लासिफाइंग दीज सब्जेक्ट्स. दो सब्जेक्ट उसको ऐसे दिखे जो बिल्कुल अजीब से थे. वन वॉज ज्योग्राफी एंड अदर वॉज हिस्ट्री. हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. What he found, these two subjects, इनका अपना कोई सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है. दे आर जस्ट भिखारी की तरह हैं. उधर से बोरो किया कुछ, इधर से बोरो किया कुछ, सब कुछ पढ़ रहे हैं. दे डोंट हैव एनी फोकल पॉइंट. सो व्हाट एसेंशियली हैपेंड, दीज ही थॉट कि अगर सपोज करो, लेट अस सी, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में एक और डायग्राम तुमने देखा होगा, दिस वन देखा है, where the branches of geography has been shown with their sister discipline. ठीक है? So Kant was of the view, with time what will happen, suppose we are talking about geomorphology or climatology, with time there will be technological growth, and with technological growth these branches of geography, they will specialize, they will more and more specialize and become more technical. ठीक है? So if they become more specialized and technical, tell me, will they become more close to their parent discipline, which is, for example, यहाँ पर geology है, there is meteorology, और अगर मैं economic geography की बात करूं, there is economics. So there is greater chance that they will become more closer to their sister disciplines. और ultimately क्या हो जाएगा? Everything they will break away from geography. So geography break हो जाएगा, there will be no subject as geography. So he recommended that if geography wants to remain as a subject, if it wants to preserve its future, it has to find
some framework through which there can be integration in all of these. ठीक है? And he ultimately found that the ideal framework for geography should be what? It should be space, geographical space. So he said that geography is essentially what? It is description of phenomena as it is distributed in space. As it is distributed in space. So that was geography. What was history? It was study of the phenomena in chronological order in time. That is essentially history. History भी geography की तरह सब कुछ पढ़ता है. So he in fact even called these subjects as exceptional disciplines. ठीक है? So that is basically the idea. So can you understand why we are saying that it is a spatial science? Why space is very important in geography? Because space is something, study of phenomena in space is something which makes geography different from other subjects. ठीक है? तो सपोज करो कि मुझे गाइडेंस में प्रॉफिट्स इंक्रीज करने, आई हैव टू इंक्रीज प्रॉफिट इन गाइडेंस. सो व्हाट आई डू, मैंने बुलाया एक इकोनॉमिस्ट को. ठीक है? एक मैंने बुलाया इकोनॉमिक ज्योग्राफर को, और मैंने बोला कि एडवाइस मी हाउ आई इंक्रीज माय प्रॉफिट्स. ठीक है? व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग एन इकोनॉमिस्ट वुड आस्क? ही वुड आस्क मी, गिव द लेजर बुक्स, अकाउंट बुक्स दिखाओ. You must be essentially there will maybe more expenditure taking place. We have to cut down the expenditure. That is one way you can make profit. Okay? So that is the idea of economist, or he would look into how to increase the revenue part. But this same approach will not be followed by an economic geographer. What he will do, he will try to ये करोल बाग में ढूंढेगा कि सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है. ठीक है? तो he will go and find that top most building. आज की डेट में टेक्नोलॉजी भी आ गई है, as you know. So there are drones. So you can also take help of drones. Whatever, he wants to take a aerial view of this area. And he wants to do what? He wants to find that ideal location where maximum number of customers will be coming. ठीक है? So for geographers, everything they have to do is what? They have to study in space. Now, once you know this, you are writing your answers and you don't include the spatial phenomena. You don't include examples which will talk about the locations. Many times students talk about case studies. But in case studies, if you are not using the locational aspect of the case studies, then it is not geography. ठीक है? So very very clearly, if you are choosing geography as an optional, अपने अंदर से एक जो hesitance है उसको निकालना पड़ेगा. And what is that hesitance? It is related with maps. How many of you have that? A kind of resistance. I as a student had. स्कूल के टाइम पे बहुत ज्यादा था. एटलस बस वो एक ही काम आता था, वो क्लास में वो गेम खेलने के लिए, वेयर वी यूज टू वन ऑफ द फ्रेंड्स वुड चूज कि ये ढूंढ के दिखा. दैट वाज द ओनली पर्पस ऑफ द एटलस. अदरवाइज इट वाज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग थिंग्स दैट वी हैड टू गो थ्रू. ठीक है? सो वेरी वेरी क्लियरली यू हैव टू remove this hesitancy from yourself. Or another resistance will be in drawing maps and diagrams. ठीक है? In drawing maps and diagrams.
एक्चुअली हम मैप्स नहीं ड्रॉ करते हैं, बिकॉज मैप्स विल ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू स्केल. So even the maps we draw, they are essentially diagrams. So that resistance in drawing the diagrams, the idea that मेरी drawing अच्छी नहीं है, ठीक है, किसको किसको लगता है? बहुत सारे लोग होंगे. I was also one of the persons who had a very strong resistance to drawing maps initially. I felt my drawing is very poor. But I found कि जितनी हमें मैप ड्रॉ करने के लिए ड्राइंग चाहिए, we are gifted with this much of talent. With little bit of practice we will be able to do that. ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है और ज्यादा कुछ नहीं करना होता. बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, यू हैव टू सिंप्लीफाई थिंग्स, यू हैव टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग. सो मैप में इफ यू लुक इनटू मैप, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट साउथ अमेरिका मैप, सो वो स्टार्ट होता है एंड देयर विल बी ऐसे कुछ करके होता है, ठीक है. व्हाट आई विल बी डूइंग, ऐसे नहीं मैं बनाता हूं. मेरे लिए साउथ अमेरिका का मैप, इधर से एक 3, इधर से एक 3. साउथ अमेरिका लग रहा है, इतना काफी है. What is more important is the pattern which I have to show, whether it is agricultural pattern, whether it is population pattern, ठीक है. It is more than enough. थोड़ा और मुझे improve करना है. I know मैंने ओशनोग्राफी में पढ़ा है कि यहाँ पर एक केप ऑफ साओ रोको है, जहां से साउथ इक्वेटोरियल करंट टर्न हो जाती है, डिवाइड हो जाती है. सो आई नो कि वहां पर केप ऑफ साओ रोको है, तो मैं उसको थोड़ा सा और इंप्रूव कर दूंगा. इससे ज्यादा नहीं चाहिए. सो मैप्स बनाने में व्हाट आई लर्न, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो गुचपुच ये नहीं चलता है. सीधी लाइनें. यू हैव टू ड्रॉ दीज मैप्स इन 30 seconds. ठीक है, और कुछ नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू, यू टेक योर फिंगर, एटलस, move your finger on the outline of the map which you have to draw. Do this for 5 days. You'll see that ultimately you will have that picture in your mind and you will be able to draw that. It is as simple as that. और कुछ भी नहीं करना है. So it requires little bit of practice. Definitely वो तो चाहिए, उसके बिना तो काम नहीं होने वाला. But थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो it is going to give you results. Because remember, spatial aspect is very, very important aspect of geography. And in fact, these maps and diagrams are the language of geography. Okay, they are the language of geography. This is the reason every year, this is like every year we see, if there are two students whose content is same, ठीक है, दोनों का कंटेंट सेम है, बट वन ऑफ देम हैज बेटर मैप्स, डायग्राम्स, द वन हु हैज बेटर मैप्स एंड डायग्राम्स विल 100% गेट बेटर मार्क्स. तो ये बहुत क्लियर है. कई बच्चों का आई हैव इवन सीन दैट देयर कंटेंट इज नॉट वेरी स्ट्रांग, बट बिकॉज दे वर ड्रॉइंग good maps and diagrams more regularly, more neatly, and they got very, very good marks. Tell me what can explain a person getting just 98 marks in paper 1 and getting 150 plus in paper 2. Very difficult to explain, क्योंकि अगर किसी के पेपर 1 में कम नंबर आए हैं, इसका सीधा मतलब है कि his theoretical knowledge is less. Because paper 1 is more like a science. Either you know or you do not know, because that is theory. So what was the key? What was the advantage that person had? This drawing very, very good maps, diagrams. Okay? So if you are taking geography, this is something which you have to do. If you look into my students who have got selected, if you go through the interviews which I have taken on YouTube, many interviews are there, you will be finding one very common thing which many will suggest you, that what they used to do, they made a separate copy of maps and diagrams.
बिकॉज एक्चुअली अभी क्या किया, जैसे मैंने यहां पर तुम्हारे सामने बना दिया, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग होंगे, मेजोरिटी जो होगा वो सोचेगा अरे ये 2 बार 3 ही तो बनाना है, सो चल के एग्जाम में बना देंगे डायरेक्ट, ठीक है. इट विल नॉट कम टू यू टिल यू हैव एक्चुअली प्रैक्टिस्ड इट अ लॉट. So what they did, they kept a separate copy of map where they drew those diagrams and they keep on memorizing those diagrams again and again. They kept on practicing those diagrams again and again. And that was the reason they were able to replicate them in the examination. ठीक है. बहुत सारे जो नॉलेज होता है वो फिक्स्ड होता है हमारे पास, वहां पर टाइम नहीं है that you will be able to essentially do that. It is very much fixed. You have to be pre-prepared. ठीक है. तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, इट विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, इफ सपोज आई डिवोट एवरी डे 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes जस्ट फॉर डायग्राम मेकिंग, मैप मेकिंग, विल इट बी टू मच ऑफ एन एफर्ट? टेल मी. टू मच ऑफ एन एफर्ट इसलिए बन जाएगा बिकॉज मेंटेनिंग दैट डिसिप्लिन इज वेरी डिफिकल्ट. In that sense, it will be a too much of effort. Otherwise, it won't be a too much of effort. ठीक है. Believe me, it is going to hugely affect your marks. So this is one thing which I have to learn. ठीक है. दूसरा हमने बोला इंटीग्रेटिव साइंस. सो व्हाई कांत वाज कंसर्न्ड कि ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट बचाना है? ये भी तो सोच सकता था कि जाने दो यार, बेकार सब्जेक्ट है, वही सारी चीजें पढ़ रहा है which others are studying, so duplicacy only. Why there is need to save geography as a discipline? Reason is very simple. All these disciplines, what they are doing, tell me, can we say they are just studying, they are taking one aspect of the reality and they are studying that reality? Yes or no? In reality, in real world, everything is interconnected to each other. Okay? Everything is interconnected to each other. So we can say biology is different and, for example, physics is different, but they are interconnected to each other. Think about this. The present atmosphere, when we'll study climatology, tomorrow this will be the first topic we will be talking about. So we will see that it is not the first atmosphere which the earth had. First atmosphere was very toxic, it was lost in space. Then second atmosphere came, it is coming through the process of degassing. When volcanoes erupt, lots of gases come out. When we study, however, these gases, we find that there is more water vapor, there is more carbon dioxide, definitely there is hydrogen, but there is no such oxygen. Even if it is coming, it is in traces. But today, tell me, is oxygen the second most important gas in our atmospheric composition? So how it has become? It is the living beings. Who is emitting oxygen? Can we say green plants? Through the process of photosynthesis? Itna to padha hai. So actually what happened, there was first life which was formed, it was the prokaryote bacteria. And these prokaryote bacteria, they could survive only in anaerobic conditions, oxygen-less conditions. They were first formed in water, but they did photosynthesis. So over a period of time, they made water bodies rich in oxygen. They changed the environment to such an extent that they themselves couldn't survive. And these evolved to eukaryote bacteria. And from there, the evolution occurred, and so many species ultimately became. And one of them were the green plants. If it was not green plants, then what would have happened? There wouldn't have been this type of life which we see around. So today, when we are talking about global warming, सबने सुना है global warming, ठीक है? And we are saying that human beings are so much modifying the environment. ठीक है? Tell me, is it new concept, modification of the environment? No, it has been going on from the first species which was present on the surface of the earth.
So what I'm trying to say, everything is interrelated. You actually cannot separate reality. Now, when each of these subjects have their just one viewpoint, ठीक है? Think about this. Should there be one subject which should actually try to study reality as it is? Yes or no? In an integrative manner, how reality is. So this task is done by whom? It is done by geography. Geography is the subject which studies everything in a very integrated manner. It combines everything in an integrated manner. And that was the idea of Kant. So Kant said space should be the framework in which geography should be studied. And this space in geography is represented in the form of regions. ठीक है? So देखो, किसी भी चीज को पढ़ने के दो तरीके होते हैं. And one is a more scientific view of study. Scientific view of study. Other is a more philosophical way of study. Scientific and philosophical way of study. ठीक है? Scientific की खास बात क्या होती है? What do you see in science? What is the characteristic of science? Tell me. Yes, there is cause and effect phenomena is there in science, but one general thing which we science find in science, tell me, are there so many universal laws and theories in science which can be applied everywhere I go? ठीक है? Everywhere I go, that can be applied. So gravity, if I drop this bottle, it will fall down. If I go to America and drop this bottle, it will fall down. If I further want to check, I go to Antarctica and drop this bottle, again it will fall down. So it is everywhere applicable. This is one very, very dominant characteristic of science. So what is that? Finding such kind of universal laws and theories. Okay? This is one dominant aspect of the science. And tell me how I would have made this law. न्यूटन के दिमाग में ये लॉ कैसे आया ग्रेविटी का? उसके सर पे सेब गिरा, एप्पल फेल ऑन हिज हेड. So did it come from outside? No, it came from inside, because he had again and again saw everything falls down. That means same pattern is repeated again and again. So if the same pattern is repeated again and again, tell me, is science concerned about finding common patterns and making laws out of them? Yes or no? So it is very much concerned about finding common patterns and making laws out of them. Okay? So that is essentially the case of science. Philosophy is little different. Philosophical way of looking at the phenomena is, what is the key in philosophy? Finding uniqueness. Uniqueness in any phenomena. What is unique? What is different? So if I see any phenomena, always there can be two type of view. One is the scientific view and the other view is the philosophical view. Okay? So generally when we are talking about the scientific view, in geography this scientific view is manifested in what we call it as systematic approach to study of geography. Systematic approach to the study of geography. ठीक है? और इस सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या करते हैं? नाम से ही पता चला सिस्टमैटिक है, यानी कि जैसे अभी हमने यहां पर क्या किया था? सिस्टमैटिक कर दिया था, ब्रेक कर दिया था पार्ट्स में. ठीक है? So what this systematic approach does, it takes the elements of geography one by one systematically and it studies them. ठीक है? और कैसे स्टडी करता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ दिस. ठीक है? सो यू नो, अगर मुझे ब्रेक करना है ज्योग्राफी को, तो वी नो दैट देयर इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड देन देयर इज ह्यूमन ज्योग्राफी, ब्रॉडली इनटू टू पार्ट्स. ठीक है?
Further, I can divide physical geography into geomorphology, climatology, oceanography, biogeography, environmental geography. Similarly, human geography, I can divide it into economic geography or political geography, population geography, settlement geography. So I can go on. Okay. So these are essentially different geographical parameters. ठीक है. ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप इन सभी पैरामीटर्स में दिखाई पड़ता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं. ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप अगर मैं पढ़ रहा हूं, डज इकोनॉमिक ज्योग्राफी टेल्स मी अबाउट ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप? यस. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एन एरिया इज वेरी फर्टाइल. ठीक है. Can I say, or this fertile area also has precipitation over 100 centimeter? In such areas, you will find that very commonly those type of crops will be grown which require water, more water intensive crops. Okay? So again, this tells me what? How human and environment relationship has essentially developed. Same thing, political geography. Again, it is adjustment between human and environment. Okay? So for example, think about this. The location, geographical location is a very important parameter. Why? What was the need for Russia to essentially invade Ukraine? Reason is very simple. They could see that NATO forces are trying to enter into the weak underbelly of Russia. If you look into Russia, Russia is a country which is from north surrounded by Arctic Ocean which is frozen. There is Ural Mountains. There is Caspian Sea. Okay? Here also several Tin Shan and all those mountains are present. So from all sides it is protected like a castle. There is, however, a weak underbelly, this steppe land which is in between this. And this extends into Ukraine. Okay? So if someone is sitting here, very clearly, it is very threatening for Russia. Already, we have the technology has so much developed in airspace. Already it is very dangerous world. Here they can be invaded from the land-based forces as well. Okay? So very clearly, if Russia is invading Ukraine, isn't it the geography which is forcing them to do so? Yes or no? Obviously, yes. So, same thing, political geography, population geography, जहां पर अच्छा resource base होगा. For example, agriculture resource base particularly. Tell me, in those areas, will there be higher population density? It will be. ठीक है? So everything will be like this. Settlement में ही देख लो. For example, India में आज के टाइम में थोड़ा खत्म हो रहा है because technology has essentially developed and overpowered everything. But if you even go in villages today also, do you find angan or the courtyard? Milta hai? So why it is found? You'll find the rooms open towards the courtyard, the doors and windows of the room. Because India is a tropical country. It is hot for much part of the year. And presence of this courtyard would make sure that there is aeration in the rooms. And this is one of the common themes you will be finding. Only place you will not find this common theme is the extreme locations of the Himalayas, where the climates become very cold and thus the angan or the courtyard might be missing. Okay? So there are different elements of geography where this relationship between the human and the environment is reflected. So in one part of geography, what we are trying to do, we are trying to study geography as a science, because always there will be two way of looking at the phenomena: the scientific way of looking at the phenomena and the
philosophical way of looking at the phenomena. ठीक है? So what is being done here in the systematic branch or the systematic approach? We are studying all of these in a more scientific way. Or tell me, isn't it the same approach in our paper 1? Yes or no? So can we say paper 1 teaches us the science of geography more, the theories of geography? ठीक है? So it is the theories of geography which is being taught by our paper 1. ठीक है? So key here is what? What is the paper this? It is regarding the theories of geography. ठीक है? और अभी हमने क्या देखा था? What was the characteristic of science? Science has what? Laws and theories, finding more about the common patterns. ठीक है? So अब मुझे बताओ कि पेपर 1 की अगर मुझे तैयारी करनी है तो कैसे करूंगा? साइंस की तरह करूंगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करते थे? रट्टा मारते थे, सिंपल है. ठीक है? आई नो कि आधे ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता था. So that is the way you have to prepare paper 1. पेपर 1 में कोई और तरीका नहीं है. You have to remember everything in paper 1. पेपर 2 में I'll teach you techniques जहां पर if you are stuck you will be still able to answer something. ठीक है? पेपर 2 में जो क्वेश्चंस आते हैं they are very dynamic. So there the chance that you will be able to manipulate and add your creativity will be high. But questions in paper 1 are very very fixed. इसी बार क्वेश्चन आता है which I was giving you one example of. Plate tectonics is based upon the idea of continental drift and isostasy. ठीक है? So it is very fixed how continental drift proved to be the stepping stone for the development of plate tectonics theory. So very importantly, in continental drift theory, the idea of permanency of the Earth's surface was challenged for the first major time in geology. So this was one of the icebreaker in a way, which made several of the scholars to think that it is possible that some parts are moving, they are not permanent. And that led to basically development of many other ideas which ultimately paved the way for development of plate tectonics theory. ठीक है? Continental drift theory didn't directly impact the development of plate tectonics theory. ठीक है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जब वेगनर ने आकर के दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो उसमें वेगनर ने क्या किया? वेगनर थॉट ही वाज वेरी स्मार्ट बिकॉज ही हैड डिस्कवर्ड समथिंग व्हिच वाज लाइक अ ब्रेक थ्रू कंसेप्ट, बट ही डिडंट न्यू द, जानते हो साइंटिस्ट था, सो ही डिडंट न्यू द बिहेवियर ऑफ द पीपल, सो ही वाज नॉट वेरी पीपल फ्रेंडली मे बी. सो ही वेंट एंड टोल्ड पीपल कि आप सब लोग गलत हो. And what I am saying is correct. Now think about scientists who would have spent their entire life in proving that Earth's surface is permanent. And you go and tell them ki, no, you are wrong. Okay? What would happen? He was ridiculed. He was so much criticized. So continental drift didn't had a major impact. Direct impact nahi tha. Everyone forgot that there existed continental drift except some people who tried to find why continental drift is taking place. Like people like Arthur Holmes, people like, if you talk about those who discovered the seafloor spreading theory, Dietz, Harry Hess. So, if you talk about in that manner, ultimately it paved the way for development of continental drift theory. अब ये fixed है. आपने नहीं लिखा है तो आपके marks नहीं आने वाले. ठीक है? So this is the nature of paper 1. It is all fixed. और यहां पर scoring chances कैसे बढ़ते हैं? The more I remember, the better ability that I have recall, the greater marks that I will be getting. ठीक है? This is the only way of paper 1. ठीक है? तो पेपर 1 में जो मेरा मेजॉरिटी ऑफ टाइम जाएगा वो किस में जाएगा? रट्टाफिकेशन में.
Now, coming to the second part, which we were talking about. So, this is what is systematic approach. But geography and geographers, they also realize that there are not always common patterns. There are also variable patterns, differences. For example, biogeography, when we'll study, we'll see one thing. You know, tropical rainforest? जानते हो सब tropical rainforest? So there are three places where tropical rainforests are found. Main जो तीन places होती हैं, one is Amazon, other is the Africa, Congo and the Guinea coast, and third is the Indonesian region where it is found. ठीक है? So generally हम tropical rainforest में पढ़ते हैं, what we study that this type of trees, three canopies at least of trees would be there, very less sunlight reaching to the surface and all those things. ठीक है? Now if the conditions are similar, tell me, shouldn't we also be finding similar type of species? मिलने चाहिए. When first time the zoologists studied these forests extensively, they were so much surprised. They couldn't find one single mammal species which was common in the Amazon forest and the Congo forests of Africa. Not one mammal species they could find common. So when I am studying some area from systematic point of view, मैंने laws बना दिए कि भाई there is tropical rainforest, उसमें there is three canopies of trees. The upper canopy of trees would have essentially, because wind वहां पर fast है, तो more evapotranspiration, so the leaves will be small, etc. etc. I made several general laws, but हुआ क्या? When I actually went into study the species, I found so much differences. ठीक है? So tell me, when you are finding this as a scientific scholar, what is your responsibility? To hide these variabilities or to also explore these variabilities? To explore these variabilities. ठीक है? So geographers are exploring these variabilities where? In the second approach to study geography, which is the regional approach. Regional approach to study geography. ठीक है? अब देखो यहां पर एक डिफरेंस आता है. If I focus just on study of unique, ठीक है? Tell me, can we say that everything is unique in this world? Yes or no? The person you were 2 days back, can you say that you are the same person? Difficult, because 2 दिन में कुछ तो learn किया होगा ना. Nobody is so much dumb that will not learn anything. So if you focus just on the study of unique things, then there will be no end to it. ठीक है? So what needs to be done? With study of unique things, can we say we still need to find some patterns? Yes or no? We need to find some patterns. We need to explain these uniquenesses. ठीक है? So अगर मुझे सपोज अफ्रीका और साउथ अमेरिका के यूनिकनेस को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? So can I say one of the essential reason was that in Africa and if you talk about South America, through continental drift they got separated. ठीक है? And that was the reason here evolution worked differently, and here the evolution essentially worked differently. And that is why we find that the species which are present, they are not the same species. ठीक है? Because evolution has clearly worked differently in both the places. ठीक है? Otherwise ये uniqueness पढ़ने का फिर फायदा क्या है? Essentially encyclopedia बन जाएगा. Nobody can mug up encyclopedia. Nobody wants the subject to become encyclopedia. Everyone wants it to be scientific. ठीक है? So geographers also, what they are trying to do, they are trying to show that even in region, what will happen? I will be able to explain it more like a science. जैसे मैंने अभी यहां पर explain कर दिया, unique feature. ठीक है?
इंडिया में हम जब जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वी फाइंड दैट देर इज अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया वेयर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड. पढ़ा है, देखा है, dry deciduous forests are found. So why dry deciduous forests are found in India? Essentially many things related with India. When it was drifting, before that it had more humid forests which were present, but when it reached to the tropics, you know, tropics mein dryness hota hai. So because of that, what happened, it became comparatively more dry, and thus there is increase in this scenario. Similarly Africa mein we'll later study कि अमेजन फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी बहुत हाई है, स्पीशीज डाइवर्सिटी वेजिटेशन की बहुत हाई है. सेम डाइवर्सिटी इज नॉट फाउंड इन अफ्रीका. सो व्हाट इज द रीजन? रीजन इज वेरी सिंपल. बाद में देखेंगे कि दिस ईस्टर्न अफ्रीका लेटर इन द प्लायोसीन प्लीस्टोसीन पीरियड ये अपलिफ्ट हो गया. सो अगर ये अपलिफ्ट हो गया, यू नो दैट अफ्रीका इज लाइंग वेयर, इट इज लाइंग इन द ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक्स में कौन सी विंड्स मिलती हैं? ट्रेड विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स. ठीक है. सो अगर ईस्टर्न अफ्रीका अपलिफ्ट हो गया, विल दिस एरिया फॉल इन द रेन शैडो इफेक्ट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका? That is the reason you'll find that there is less diversity in this the Congo forest of Africa. And here we'll find the largest savanna landscape is found where? GS में पढ़ा होगा, it is found here in Africa. ठीक है. So if I don't explain those uniquenesses, what will happen with regional approach? It will become encyclopedia. Nobody is interested in mugging up or studying encyclopedia. ठीक है. सो रीजनल अप्रोच हमारे सिलेबस में कहां पर मेंशन है? इट इज पेपर 2. ठीक है. सो आवर पेपर 2 इज एसेंशियली व्हाट? इट इज बेस्ड अपॉन द रीजनल अप्रोच. Here we are studying, focusing upon one region, that is Indian region. ठीक है. So it is essentially based upon this regional approach. But very important thing is, इसको भी मुझे कैसा बनाना है? I have to make it explanatory, not descriptive. दो चीजें हो सकती हैं. जब हम यूनिक को पढ़ते हैं तो इट रिमेन्स डिस्क्रिप्टिव, केवल डिस्क्रिप्शन हो रहा है. पहले पार्ट में मैंने क्या किया? डिस्क्राइब किया तुम्हें कि देयर इज डिफरेंस. आई डिडंट एक्सप्लेन. लेटर व्हाट आई डिड, आई ऑल्सो एक्सप्लेन्ड व्हाई दिस डिफरेंस इज प्रेजेंट. ठीक है. सो दिस इन रीजनल अप्रोच इसके हमेशा दो पार्ट्स होंगे. वन will be the description of unique phenomena. ठीक है. This is the description of the unique phenomena, plus what will be the second part? Explanation of the unique phenomena. ठीक है. So there will always be two parts of this regional approach, description and explanation. ठीक है. अब एक्सप्लेन करना है मुझे कोई फिनोमेना, तो टेल मी, मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा? हाउ आई विल एक्सप्लेन? कैन आई से, शुड आई नॉट बी यूजिंग लॉज एंड थ्योरीज विच वर डिस्कवर्ड और डेवलप्ड इन पेपर 1? yes or no? Obviously yes. That is how I will be describing the or explaining the phenomena, the unique phenomena. That is the way of explaining them. ठीक है. So I will be using the concepts which I would have learned from paper 1. That is the way. So geography में ये regional approach को हम कहते हैं chorography. Graphy is description. And later geographers said that regional approach is not just concerned with chorography, it is concerned with chorology. कोरो का मतलब होता है geographical space. ठीक है. It is space, region in fact. So what is the target? सभी geographers का target है कि हम क्या करें? रीजनल ज्योग्राफी को साइंस बना दें.
बहुत कोशिश की गई, बहुत कोशिशें की गई, बट दे वर अनएबल टू अचीव सो मच सक्सेस इन डूइंग सो। ठीक है, एक चीज याद रखना, सोशल साइंसेस के जो स्कॉलर्स होते हैं, दे आर लाइक, कह सकते हो कि जैसे इंडिया में एक लोअर कास्ट की सिचुएशन होती है, एकेडमिक्स में सोशल साइंसेस के स्कॉलर्स की वही हालत होती है। ठीक है, दे आर द लोअर कास्ट पीपल इन एकेडमिक्स, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू से कि मेरा सब्जेक्ट साइंस है। Nobody is accepting that it is essentially a science. Because think about you, everything, turn around you and see. Whatever I see around my, the comfort and everything, has it been produced by science? Has science made a actual difference in the people's life? Absolutely yes, it has done so. And if it has done so, now tell me very, very clearly, if you are science, will you get better status in society? Will people in the society respect you? If I tell people, go to someone and say, give me money for research, I'm going to do this scientific research. Is there a probability that you'll get more money? Yes, there's a greater possibility. Okay? But if you are not a science and you go, I'm a philosopher and I want to think on this issue, tell me, will you get the money? Very improbable, हो सकता है कुछ गालियां दे करके भगा भी दिए जाओ। ठीक है, so all these subjects, what they were trying to do, they are trying to prove that they are science, because being a science, that would mean that their status in the society has increased. More importantly, it means in more practical terms that they will get more money for research. ठीक है, so all these subjects they want to look more scientific. So geography में the regional approach, it has to be what? It has to be scientific. It is the dream of the scholars to make it more scientific. ठीक है, अब देखते हैं कैसे हम बना सकते हैं। सो अगर मैं देखूं, अगर मुझे बात करना है सपोज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की, ठीक है, सो टेल मी, इफ आई से दैट, if I take two states, suppose I take Punjab and I take Bihar, what is the level of agriculture development in both of them? Punjab has highly developed agriculture, Bihar has a very subsistence type of agriculture. ठीक है, पंजाब में बहुत कॉमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो चुका है। इन बिहार देयर इज वेरी सबसिस्टेंस लेवल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ठीक है, नाउ टेल मी, अब मैं इसको, मुझे समझाना है। ठीक है, मैंने अपने पेपर 1 में एक थ्योरी पढ़ी है, विच इज, इफ यू हैव सीन, वॉन थ्यूनेन मॉडल, मॉडल्स एंड थ्योरीज में मेंशन्ड है। ठीक है, वॉन थ्यूनेन कहता है कि if suppose there is a market and you move away from the market, what will happen? Here is the intensity of agriculture. Intensity of agriculture will decline as you move away from the market. ठीक है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर में? इट इज द इंटेंसिटी ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर में यू आर पुटिंग सो मच ऑफ इनपुट, you are making the intensity of agriculture very high, thus it is giving you more productivity and more production. ठीक है, तो अगर मार्केट के पास में हो, then what will happen? Because your transportation cost will be less, this means you can use rest of the money to input more inputs, more fertilizers, and thus what will happen? Your agriculture would be more developed, it will be more commercial type. As you move away, tell me, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। So that means you will have to reduce the cost of production में कम करना पड़ेगा, because you are getting a fixed price for that same commodity in the market. ठीक है, नाउ अब देखो, इंडिया में प्राइमरी एग्रीकल्चरल मार्केट्स आर एपीएमसी मंडीज. You must have heard about the farmer protest and so many things were taking place for these APMC mandis. So these are the
APMC mandis. In Punjab, what is happening, the average distance between the farm and the APMC mandis is below 6 km in Punjab. In Bihar, there are no APMC mandis. They were removed. 2006, they were essentially removed. They were non-functional even before that. So can I say I can explain the development levels on the basis of this theoretical explanation? Yes or no? Can I use this as a framework to explain it is one of the reasons why there is underdevelopment in case of Bihar. We'll see agriculture is multifaceted. So there are other reasons as well. But this is one of the reasons. ठीक है, अब देखो यहां पर दो बातें थी. ये टेक्निक आई यूज टू लिसन फ्रॉम माई टीचर्स कि अगर इफ यू यूज कंसेप्ट्स इन पेपर टू इट विल बी यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. जब मैं उनसे पूछता था कि एक करके दिखा दो तो एक भी नहीं करके दिखाता था. ठीक है, देन आई डेवलप दिस एंड आई स्टार्टेड टू टीच स्टूडेंट्स. बट स्टूडेंट्स ने एक चीज रॉन्ग लर्न कर ली मेरे से, एंड सम ऑफ देम हैव सफर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस. If you look closely, I have said there are two parts of regional approach. One is description. Description of what? Description of unique. Description of the unique and then the explanation of that unique. ठीक है, तो ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब मेरे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, उनको एक आसान रास्ता सर ने सिखा दिया कि वो यूनिक जहां पर आपको मेहनत करनी है लर्न करने में, ठीक है, वेर यू विल एक्चुअली हैव टू रीड एंड मेमोराइज दोज यूनिक थिंग्स, डू लॉट्स ऑफ मैपिंग. वो नहीं किया और पेज भरने के लिए थ्योरी मिल गई, क्योंकि थ्योरी पेपर 1 में पढ़ी थी, और पेपर 2 के आंसर को थ्योरी बना दिया, पेपर 1 का आंसर बना दिया, विदाउट राइटिंग दिस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. सो मैंने अभी क्या बताया, पंजाब में ये कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर. इफ यू डोंट राइट दिस यू विल नॉट गेट मार्क्स. So that uniqueness is also very important in if you talk about paper 2. So this will be our approach in paper 2. Paper 2 में जो हम अलग करेंगे, this will be the part where we will do little bit different. ठीक है, so one way in which you make paper 2 answers look more geographical is the interrelationship with concepts of paper 1. Concepts of paper 1. ठीक है, दूसरा, there is another way. कई जगह पर एक्चुअली में there will be lack of concepts because geography is still a developing science. It is not a fully developed science. ठीक है, so there is no such theoretical background to essentially explain that phenomena. तो उस तरह के phenomena को explain करने के लिए हम क्या करते हैं, we use examples and case studies. So this is the second way in which you will be talking about. So suppose I am studying a morphology of a city. What is the land use pattern within a city? ठीक है, and I am saying that many Indian cities have relationship with this theory. One theory is their concentric zone theory. उसमें कहता है कि city grows from one point outwards and concentric zones are thus developing. ठीक है, अब सोचो कि मैं ये ना बताऊं कि सपोज मैंने एक केस स्टडी ले ली दिल्ली की. ठीक है, सो दिल्ली में हमें क्या मिलता है, कनॉट प्लेस, नियर बाय देयर इज ऑल्सो, इफ यू टॉक अबाउट चांदनी चौक. ठीक है, तो ये दोनों सीबीडी हैं दिल्ली के, सेंट्रल पॉइंट. एंड
presence of there is ring roads. There is inner ring road and there is an outer ring road. ठीक है. So tell me, रिंग रोड कब बनाना पड़ता है? अगर सिटी सेंटर से बाहर की तरफ इस तरह डेवलप हो रहा है तो विल इट बी कन्वीनियंट फॉर अ पर्सन, सपोज उसको यहां से, सपोज उसको ए से बी जाना है तो उसको ऐसे जाना ठीक होगा, और इफ आई कनेक्ट दीज प्लेसेस दे शुड बी कनेक्टेड. So this is the reason why ring roads are found in so many of the cities. ठीक है. So if I don't give an example or case study to support my view as an evidence to what I am writing, again it wouldn't look geographical. So that will be the second area where you will be focusing upon. And जो एक common जो होता है geography का language मैंने जो बोला, that will always be there, that is diagrams, which includes the maps. ठीक है. What I have observed from the students' marks, तो मुझे कुछ कुछ ऐसा दिखता है. In your evaluation, if you talk about paper 1, there are three main elements on which the marks are allotted to you. First, if you talk about is your content and approach. Content and approach. ठीक है. Second, if you talk about is your diagrams, examples and case studies. And third is your presentation. Your copy should be neat, more neatly written. ठीक है. So I feel that these are the three parameters on which I believe that they are checking the copies. ठीक है. इसमें थोड़ा सा और भी चीजें ऐड करनी है तो लैंग्वेज वगैरह ऐड कर सकते हो. बेसिकली दैट इज द केस. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन पेपर 1 एंड पेपर 2? पेपर 1 एंड पेपर 2 में क्या हो रहा है? कंटेंट एंड अप्रोच में there is almost they are giving weightage of 80% in paper 1. Diagrams, example, case studies, paper 1 में 10% weightage and 10% weightage to this presentation and other aspects of your answer. ठीक है. So कितना भी बच्चे को लग रहा है कि उसने बड़ा अच्छा लिख दिया है और डायग्राम्स, केस स्टडीज भी बना दिए हैं, बट अच्छा कंटेंट नहीं लिखा है, अप्रोच इज नॉट करेक्ट. ठीक है. जैसे इसी बार क्वेश्चन आता है factors affecting distribution of precipitation. This was the question. Explain the factors affecting distribution of precipitation. अब मैंने क्लास में कैसे करवाया है? मैंने एक्सप्लेन किया. मेरा क्वेश्चन था क्लास में करवाने का, गिव अ रीजनड अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ precipitation. So my keyword was different in the question. My primary keyword was distribution. So मेरे पैराग्राफ्स की जो हेडिंग बनी वो डिस्ट्रीब्यूशन पे बनी. सो जोनल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन जोनल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने ऐसे हेडिंग बना करके दिया. ठीक है. बट क्वेश्चन देयर वाज डिफरेंट. एक्सप्लेन द फैक्टर्स. सो कंटेंट सेम था. जहां पर मैंने लिखा कि डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर हेडिंग हो जाएगी तो आई टोल्ड अबाउट द जोनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है एंड द नॉन जोनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. और इसके अंदर जो मैंने हेडिंग्स बनाई, अब इसके अंदर मैंने बताया कि ये फैक्टर. सो फैक्टर 1, फैक्टर 2, यहां पर मैंने बताया फैक्टर 3 एंड फैक्टर 4. ठीक है. बट मेन हेडिंग क्या थी? इट वाज डिस्ट्रीब्यूशन वाज द मेन हेडिंग ऑफ द पैराग्राफ. क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इट वाज एक्सप्लेन द फैक्टर्स. ठीक है. सो एक्सप्लेन द फैक्टर्स में कैन आई से नाउ द हेडिंग्स विल बिकम द फैक्टर्स. ठीक है. It will be the factors which will be the heading, not the distribution. ठीक है. So that is very important thing. This is what we call it as approach.
whether you have understood the demand of the question or not. So this is your content and approach. And this is the, I think, division which they are doing in paper 1, because in general एक बात बहुत clear होता है when I talk to students, जिसका conceptual knowledge weak है, those who haven't marked up properly, they are getting less marks in paper 1. ठीक है? So that is the key. Paper 2 में, however, a scenario is very different. We find that there are students जिनके paper 1 में कम number आए, which tells me that his theoretical knowledge was weak. But still people are getting 140, 150 plus marks. And it is surprising. This tells me that this person has what? Maybe doesn't has that much of content and approach, but here and here he or she was doing very, very well. Okay? So if you talk about, I feel that here they are allotting something between 60 to 70% of marks. And if you talk about here, it is again 10% of marks which are being allotted. If you talk about जो बचा हुआ है, which is 20 to 30% weightage is actually given to your diagrams, examples and case studies. ठीक है? So this is one of the factors we see. Many of the students, they are doing so well despite even less knowledge. ठीक है? So देखो होगा क्या? As a student, many of you will be so much engrossed in becoming in paper 1 कि भूल जाओगे कि there is also paper 2. पेपर 1 प्रिपरेशन में टाइम भी ज्यादा लेता है. ठीक है? बट दोनों में एक डिफरेंस है. And what is the difference? If suppose you want to increase your marks 20 marks, 30 marks, the amount of effort that you will have to put in paper 1 to increase that 20, 30 marks, it will be 3 times more than the actual effort that you will be putting in paper 2. 1/3 effort you have to put in paper 2 and you'll get the same marks increased. ठीक है? और पेपर 2 का मेन तरीका क्या है प्रिपेयर करने का? राइटिंग एज मेनी क्वेश्चंस आंसर्स एज much as I can. I have advised many of the students who got less marks and I advised them कि पिछले 10-15 साल के पेपर सॉल्व करो. And there was sudden jump in their marks in paper 2. And how much it actually took in solving some of the questions of the previous year? Not much. So जितनी मेहनत पेपर 1 में करोगे, उसका 1/3 मेहनत के साथ सेम अमाउंट ऑफ, इफ यू टॉक अबाउट, मार्क्स कैन इंक्रीज इन पेपर 2. ठीक है? एंड दिस इज वन थिंग विच मेनी स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट. और उसकी वजह से क्या होता है कि दे विल गेट जस्ट सपोज 110 115 मार्क्स इन पेपर 1, उतने ही मार्क्स आ रहे हैं पेपर 2 में. थोड़ा सा और एफर्ट लगा लिया होता तो सेम मार्क्स जो 110-15 है, दे वुड हैव गॉन 140. और 140 अगर आ गए आपके पेपर 2 में, so that means you are very near to that number which was the magic numbers like this year. 260 से 280 was the magic numbers which ultimately got you in the list. ठीक है? So this is one important understanding that we have to develop about how you will be preparing. ठीक है? So that is the case. Then what will be the sources of study? Sources are very clear from my side. One important source, if you talk about, is the class notes. ठीक है? गाइडेंस में हम तुम्हें 2 तरह के क्लास नोट्स देते हैं. वन इज जिसको हम बोलते हैं हैंडआउट्स. ठीक है? व्हाट आर दीज हैंडआउट्स? हैंडआउट्स आर द नोट्स विच आई अर्लियर यूज्ड टू डिक्टेट. सो उसमें काफी टाइम लगता था. वी गॉट इट प्रिंटेड.
So that is the handouts. And then there is what I call them as the booklets. ठीक है? So difference क्या है? Handout is the one which I used to dictate in the class. Thus, it means it has come out in a very natural and easy language. ठीक है? And it would cover only those things which is very very important for the examination. ठीक है? Booklets क्या है? These are simply copy paste from the books. ठीक है? जो बाकी जगह देखा होगा तुमने, सब देते हैं वो एक प्रिंटेड. सो इट इज अ ट्रेंड, तो हमें भी फॉलो करना पड़ेगा ट्रेंड, अदरवाइज पीपल विल फील कि इनके पास कंटेंट ही नहीं है. ठीक है? सो दैट इज एसेंशियली द बुकलेट पार्ट. नाउ इससे एक बात बहुत क्लियर है कि जो हमारा कोर है, कोर ऑफ द स्टडी वुड बी बेस्ड अपॉन हैंडआउट्स. दिस विल बी द कोर. ठीक है? अब देखो, आई डोंट discourage you from reading the books. If you want, you can. But just follow my just one advice and do it in this manner. Follow a reverse approach. What is the reverse approach? Normally हमें लगता है कि हम पहले बुक पढ़ते हैं फिर नोट्स पे जाते हैं. This is the normal attitude which students have. I would say first what you do, you consolidate your core. ठीक है? Develop an understanding about the topic. एंड देन अगर एनर्जी बची है, टाइम बचा हुआ है, देन यू गो टूवर्ड्स द बुक्स. ठीक है? सबसे पहले क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज इफ यू ट्राई टू गेन टू मच ऑफ नॉलेज, इट विल बी स्कैटर्ड इफ यू डोंट हैव दैट कोर. ठीक है? सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू डेवलप द कोर थ्रू द हैंडआउट्स. उसके बाद यू कीप ऑन एडिंग लेयर्स ऑफ नॉलेज as you keep on gathering. This can be the sources from the books. This can be magazines, other current affairs which you are reading. ठीक है? You can keep on adding them. But अगर आपने ये core नहीं बनाया, तो ये जो edition है ये कैसा हो जाएगा? It will be like this. And that is the main problem most of the students are facing. ठीक है? So first thing what we will do, we will consolidate the core. And you can understand कि I'll challenge you कि come to me and say कि मैं इसमें बिल्कुल I have become very very strong in the core, that is the handouts. I don't find anyone. Nobody is able to reflect that in the tests which we conduct. Nobody is able to do that. Because if you have become very good in this core, your fear of content will be gone. You will not be fearful with respect to the content. You will be in a position to produce your own content. ठीक है? सो ये चीज ध्यान में रखना. सो वी विल बी फॉलोइंग दिस. नाउ कमिंग टू द बुक्स, क्योंकि सबको ही यू हैव टू शो टू द सोसाइटी दैट वी आर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स. सो बुक्स तो जरूरी हैं बिकॉज आई विल ऑल्सो बी गिविंग सम होमवर्क इन सम एरियाज, नॉट एवरीवेयर, इन सम एरियाज. सो 3 major books we will be using. One is the physical geography, Savindra Singh, a very commonly available book. Some good diagrams are present, some concepts are good also given. We will see. Second, there is a book by the name of Models in Geography by Majid Hussain. Models in Geography by Majid Hussain. So this is for physical geography, this is for human geography, and third if you talk about is Indian geography, और geography of India I think book का नाम है. So it is Geography of
इंडिया बाय DR खुल्लर। ठीक है। रिसेंट में मैंने बुक देखी माजिद हुसैन की, ठीक है, जो रीसेंट, और उस बुक के को देख करके आई फेल्ट कि सम स्टूडेंट हु वाज माय स्टूडेंट हैज अपडेटेड द बुक। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जो मैंने प्रोड्यूस की थी, जो बुक में अभी इंक्लूड हो गई हैं। तो दिस बुक इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड नाउ। पहले दिस बुक वॉज नॉट सो मच गुड, बट अभी मैंने रीसेंट एडिशन इसका खरीदा एंड आई रियली वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस रीसेंट एडिशन। ठीक है, सो एनी ऑफ दीज वुड डू, दोनों में से कोई एक ही रखना है, DR खुल्लर और द माजिद हुसैन। ठीक है, दिस वन इज मोर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस वन इज अ मोर एकेडमिक टाइप ऑफ बुक। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। सो दिस इज द थ्री बुक्स। देर इज ऑल्सो 4 and 5, एंड 4 and 5 क्या है? ओरिएंट ब्लैक सॉन एटलस, and Oxford School Atlas. Two atlases you keep with yourself. I will be using this one in the class. Some physical aspects are better given in Oxford. Okay. So this is the 5 books you have to keep with yourself. इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. There is no need. Again, the challenge will be completing the class. वही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। डेली का रिवीजन करना, उस पे जो बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना, दैट विल बी द बेस्ट, द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू विल बी एसेंशियली फेसिंग। ठीक है, सो दिस इज द सोर्सेज दैट यू एसेंशियली हैव टू कवर। और जैसा कि मैंने बोला, द आइडिया इज वेरी क्लियर, अ रिवर्स अप्रोच। ठीक है, अब देखो टाइमलाइन भी बनाते हैं 2023 में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, क्या क्या करना है हमें। सो द फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल ऑफ, एक लेवल होता है जब हमने पढ़ लिया, एंड अदर इज आई हैव रिवाइज ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्लास के साथ चलेगा, एंड दिस वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन दिसंबर। ठीक है, ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता था पहले कि दिसंबर में कोर्स कंप्लीट करना, बिकॉज आई वॉज द ओनली टीचर हु वॉज टीचिंग। ठीक है, अब बीइंग एन ओनली टीचर हु इज टीचिंग ऑप्शनल, एंड यू नो ऑप्शनल गोज ऑन 6 days इन अ वीक। ठीक है, मनरेगा का मजदूर जो होता है वो भी इतनी मेहनत नहीं करता है लिटरली। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन, आई यूज्ड टू टेक लॉट्स ऑफ ब्रेक्स, तबीयत खराब हो गई एंड वट एवर। सो नाउ व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिजाइंड, देयर आर 3 people हु विल बी देयर, एज यू वुड हैव गॉट द स्केड्यूल, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि कौन से टॉपिक्स कौन लेगा। ठीक है, और सबके डेट्स फिक्स्ड हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी के बाद जियोमॉर्फोलॉजी शुरू हो रहा है, तो आई दैट इज नॉट माय क्लास, आई हैव टू फिनिश समहाउ। बीच में अगर कुछ इधर उधर होता है तो एक्स्ट्रा क्लास लेकर के मुझे वहां पर खत्म करना है। ठीक है, सो दिस ईयर one thing is clear, we will be completing it in December. Then, now once you have completed this, then comes your stage 2. Or I don't expect anything from you in this stage 1 other than you revising the class notes. कुछ भी और नहीं चाहिए मुझे, केवल क्या करना है, you have to revise the class notes. अपनी एक रफ कॉपी बना लो, उस रफ कॉपी में यू लुक इनटू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो टॉपिक के चल रहे हैं, एंड यू ट्राई टू सॉल्व देम। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स के साथ मैंने देखा है कि दे विल थिंक अभी उनकी क्लास चल ही रही है, एंड दे विल राइट आंसर्स एंड दे विल कम टू मी कि सर ये देखो ये आंसर लिख दिया है, एंड दे कीप ऑन कलेक्टिंग दोज आंसर्स। ठीक है, आई जस्ट से कि उसको रफ की तरह रखो, बिकॉज
you will see as time passes by, you will keep on gaining more maturity in the subject. So the answers which you will be writing on the first day, they will be drastically different from the ones which you will be writing in the later stages. ठीक है, बेसिक आइडिया क्या है, अपना हाथ और दिमाग को चलने की प्रैक्टिस करवाना. ठीक है, दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग. ठीक है, इसमें और भी चीजें हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग 2 classes in a day and you have to revise also, you will not practically get too much of time to write many answers. So if suppose you are allotting yourself 30 to 40 minutes to write answers and you write full answers, then क्या होगा, एक या दो मैक्सिमम कर पाओगे. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपना एक टारगेट बना सकता हूं कि 1 आंसर आई विल राइट कंप्लीट एवरी डे, एंड अदर्स जितने भी हो पाए, 3 से 4 5 जो भी हो सकता है, जस्ट डू फ्रेम वर्किंग ऑफ द आंसर्स. कि इंट्रोडक्शन में, जस्ट थिंक, इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए. ओके, आई जॉटेड डाउन द कीवर्ड विच शुड बी द बेस ऑफ इंट्रोडक्शन. मेन बॉडी शुड हैव हाउ मेनी पार्ट्स, what should be the headings of the paragraphs of the main bodies. ठीक है, so this is basically what the frameworking of the answer. तो जब मैं frameworking कर रहा हूं, tell me, am I not like writing answer? I am writing answers in my mind. I can complete this activity in 3 to 4 minutes. Writing one answer will take more than 20 minutes initially. But if I do this, I'll be able to do that in 3 to 4 minutes. और इस activity को ये क्या कर रहा है? It is making your mind work. One of the very powerful technique of revision, which not many students follow, is thinking about the topic without looking into the matter. किताब बंद कर दी, सपोज मैंने पढ़ा वॉल्केनिज्म. सो वॉल्केनिज्म पढ़ने के बाद मैंने बुक को बंद कर दिया एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट आई वाज टॉट इन वॉल्केनिज्म. ओके, कंसेप्ट ऑफ वॉल्केनिज्म बताया सर ने, एंड 2 type of volcanisms can be there, endogenetic and exogenetic, or intrusive extrusive, what we call them as. ठीक है, so intrusive and extrusive type of volcanism. Then sir talked about that there were 3 major stages of volcanism. One is the generation of magma, other if you talk about is the rise of magma, and the third is the emplacement of magma. Generation of magma में sir talked about some factors. Temperature was one of the factors, pressure was one of the factors, water involved is one of the factors, and the composition of rocks was one of the factors. ठीक है, so can you see what I am doing? जो मैंने पढ़ा उसको बिना देखे रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं. अब इसमें क्या होगा, मैं भूल गया, सपोज 4 फैक्टर बोले थे, आई फॉरगेट, मुझे 2 ही याद आ रहे हैं, 2 मैं भूल गया. सो आई रिमेंबर टेम्परेचर एंड प्रेशर, but I forget water, amount of water involved, and composition of rocks. So what will happen? I will just open the copy and see कि अच्छा ये 2 और factors थे. Remember, when you make mistakes and learn from mistakes, those things you never forget in life. ठीक है? So when I am doing like this, it will be engraved in my mind, and from next time I will never forget it. So this is the way what you have to do. You have to keep on revising every day. एक बार पढ़ लिया, don't think कि वहां पर वो तुम्हारा काम खत्म हो गया. Even when you are sitting alone, even when you are you have time, you are sitting idle, rather than literally the worst thing that has come up today these days is every day you know how much time of our lives go in this. We could have used that same time to develop our minds, but we are not doing. ठीक है, so what you have to do, you have to make sure you use your mind, you use your time more properly. And it is no wonder many of the students who got selected, actually what they did, they left smartphone, use of the smartphone. And I will bring some of them and they'll tell you
Literally, they stopped using smartphones just because that was too much time consuming and wastage of time. So if you have that willpower, you can also do that, because I know this is one of the main culprits, which is not allowing you to think, which is not allowing you to have that idle time. Because actually in a day you cannot study more than 7 to 8 hours, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं कितनी भी कोशिश कर लो, और बाकी का जो टाइम है वो आइडल होता है, एंड वी स्पेंड दिस टाइम हियर एंड देयर. So this time has to be used properly, because that will be the edge that you will have over the others. ठीक है? So during this stage 1, this is the only thing I expect from you, और मुझे कुछ नहीं चाहिए. ठीक है? Stage 2 जब आता है, here again this will be the second revision time, or this will be your January and February, period of January and February. ये 2 month you have to make sure that you are completing your one revision during this period. इस revision के time में I expect you do 2 things. ठीक है? What is those 2 things? Paper 1 में you just follow rectification. उसको याद करो, क्योंकि जो हमारे नोट्स हैं पेपर 1 में एकदम सीधे क्वेश्चंस आते हैं उठ के. ठीक है? तो वहां पर rectification ही काम आएगा. पेपर 2 इतना डायनामिक हो गया है, you might have seen, it is beyond anyone to actually predict what they are going to ask in paper 2. ठीक है? So what type of ability I have to develop in paper 2? To be able to solve questions. ठीक है? So in this months of January and February, because you have already completed your syllabus one time, you will be following this simple step. So first, step 1, I will revise the topic. ठीक है? Suppose I am talking about physical setting. ठीक है? तो स्टेप 1 में मैंने उसको क्या किया, उसका रिवीजन कर लिया, एक बार फटाफट जल्दी से रिवाइज कर लिया. इट विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम. देन व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 में आई विल टेक आउट द टॉपिक वाइज क्वेश्चंस. ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड दिस विल बी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उठाए, और आई एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग आंसर्स. ठीक है? सो सपोज मैंने एक आंसर लिख लिया, आई हैव रिटन वन आंसर. देन कम्स स्टेप 3. स्टेप 3 में अगेन मैंने क्या किया, रीडिंग द कंटेंट आई हैव ऑन द टॉपिक, द कंटेंट विच आई हैव ऑन द टॉपिक. ठीक है? अब ये देखो, पेपर 2 की सबसे खास बात क्या है, the questions which are being asked in paper 2, they are very dynamic. So not every aspect of the topic is covered in your notes. ठीक है? So what you can do, sometimes this content can be gained from the notes, you can get it sometimes from the books, or even from Google. ठीक है? So जो टॉपिक पूछा गया है, मैंने उस पर अपनी समझ को थोड़ा सा और इंप्रूव कर लिया. ठीक है? Then comes step 4, and it is self evaluation. जो आंसर लिखा है, I would self evaluate it. अगर मैं डायरेक्टली इवेलुएट करूंगा बिना एक बार पढ़े, तो इमोशनल अटैचमेंट की मैंने लिखा है तो बहुत बढ़िया होगा, इट विल कम बैक and you'll not be able to self evaluate properly. So you, next step, you self evaluate those questions where you feel that you are getting good marks. ठीक है? 50% and above marks which you feel you are getting, you can bring as step 5 to me to show them. ठीक है? क्योंकि जब तुमने खुद ही कमी निकाल ली, तो उसमें मैं तुम्हें और क्या बता सकता हूं.
सो इन जनवरी एंड फेब्रुअरी ये चीज हमें अचीव करनी है, यानी कि तुम्हें यहां पर भी कोई बहुत ज्यादा बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा। थोड़ी सी बुक्स अगर देखनी है तो वी आर जस्ट लुकिंग फ्रॉम टॉपिक वाइज, कुछ कुछ सेलेक्टिव जहां पर मेरे पास कंटेंट की कुछ कमी है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, क्लियरली आफ्टर दैट यू विल स्पेंड द एंटायर टाइम इन योर प्रीलिम्स, और जनवरी एंड फेब्रुअरी में द टाइम विच विल बी अलॉटेड फॉर ऑप्शनल शुड बी अराउंड 30% टाइम इज ऑफ योर टोटल स्टडीज वुड बी, इट शुड नॉट बी मोर देन दैट। इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, 70% टाइम जीएस को ही देना है। उसके बाद there will be full time which will be given to GS. Then comes the period of June to, if you talk about August, September, which is the present cycle of the exam. If you have cleared the prelims, you will be writing the mains, which will be conducted in September. And during this time, you join one test series. ठीक है, इस समय एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। आइडियली टेस्ट सीरीज शुड बी बोथ जीएस एंड द ऑप्शनल, दोनों को ज्वाइन करना है, बिकॉज वी एक्सपेक्ट कि तुमने अपनी पढ़ाई काफी हद तक यू हैव कंप्लीटेड। सो इट इज द टाइम ऑफ मोर एंड मोर एसेंशियली प्रैक्टिस। सो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट, यू हैव टू कीप ऑन improving जो mistakes otherwise you'll be doing in the exam, you better do in the test series। ठीक है, test series will also give you a schedule। Basically what is the role of test series? Number of them, one is it gives you a schedule of study। ठीक है, एक फायदा टेस्ट सीरीज से ये होता है। अनदर इज दैट इट विल हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट द मिस्टेक्स विच यू विल बी अदरवाइज डूइंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट वी हैव टू फॉलो, एंड आई फील कि ये यहां पर लिखने में कितना इजी था मेरे लिए। स्टेज 1 में हो गया, ठीक है, everyday revision and everything। Stage 2 में we have written lots of done lots of rectification, and here we have done lots of answer writing। ठीक है, but it will require actually a huge amount of discipline to do this, and it will require you to be very focused, not get diverted from your path, even if some people tell you कि नहीं नहीं ये वाली strategy follow कर। ठीक है, it is very important, you when you take up something you reach to the end of that and see whether it is giving you results or not। ठीक है, so don't have to get diverted, you have to make sure you do that। क्योंकि बीच में जहां पर डाइवर्जन आया, पता लगा कि किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट ने बोल दिया नहीं जियोमॉर्फोलॉजी सविंदर सिंह देखनी है, तो देखने में ही निकल जाएगा पूरा साल। दैट इज अ गारंटी, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट बुक। there will be places where you will not understand। ठीक है, but as time passes by, as you try to mug up, ज्यादा से ज्यादा याद होगा तो समझ में भी आने लगेगा, विश्वास करो उसको। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज दैट रट्टाफिकेशन बिफोर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी की सभी बुक्स में लिखा होता है, ठीक है, देयर वाज अ पीरियड, प्री मॉडर्न पीरियड, तो उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एंड कार्ल रिटर। ठीक है, तो कार्ल रिटर का ऑब्जेक्टिव इज रिटन, ही वांटेड टू फाइंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, हम्बोल्ट इट इज रिटन यूनिटी ऑफ कॉस्मोस। ठीक है, सभी बुक्स में यू विल फाइंड इट इज रिटन। एज अ स्टूडेंट मैं उसको पढ़ता था और बार बार भूल जाता था कि कॉस्मोस वाला कौन सा है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कौन सा है। ठीक है, बट ठीक है, याद हो गया। आई ट्राई टू सर्च, अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है, व्हाट दे मीन बाय दिस, बट टू नो यूज, बिकॉज इट वॉज नो वेयर रिटन इन द बुक्स, कहीं पर एक्सप्लेनेशन था ही नहीं कि व्हाट इज द मीनिंग विच इज देयर व्हेन दे आर सेइंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी और द यूनिटी ऑफ कॉस्मोस। ठीक है,
वन वॉज अ सिस्टमैटिक जोग्राफर, अदर वॉज अ रीजनल जोग्राफर। दोनों की पढ़ने का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट था। ठीक है। देन एज अ स्टूडेंट आई एक्चुअली नेवर अंडरस्टूड। व्हेन आई became a teacher, I had to teach this thing again and again and again and again in every batch. So what happened, ये मुझे याद हो गया. And when it, all the things, when I actually mugged up, now the connections began to start. And I had studied chorology. Chorology was where they wanted, even regional geographers wanted to develop science of geography. So then I understood कि what is unity in diversity. Even if there are diverse things, you study those diverse things and find common patterns. Unity of cosmos, same thing, you find common patterns. So both of them were saying what? When they are saying that objective of geography is to find unity in diversity, or it is unity of cosmos, both of them are saying that objective of geography is to develop science of geography, those general principles of geography. ठीक है। तो मुझे इसमें किसी बुक ने हेल्प नहीं किया। आई डिस्कवर्ड इट, आई अंडरस्टूड इट माई सेल्फ। दैट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स। सो होता क्या है, देर विल बी concepts, there will be places where you will not understand, but over a period of time, essentially you will begin to understand. So जब ये स्टेज आती है कि कुछ चीज समझ में नहीं आई, तो what the students would do, they will get diverted from their path and they will begin to look for several sources कि मुझे समझ में आ जाए, rather than having little bit of patience and trying to just mug up the source which you have. ठीक है। So this is, you'll have to promise that you are not going to do this. There is a easy way, you try to mug up, you try to remember it. ठीक है। फिर से बताता हूं, रिमेंबर होना बहुत मुश्किल होता है, इट इज अ डिफिकल्ट थिंग. फॉर दैट यू विल हैव टू रीड दोज थिंग्स मल्टीपल टाइम्स. दैट इज द ओनली वे. वन वे इज यू मेक अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग इन माइंड. ठीक है। कई बार ऐसा हुआ कि सम स्टूडेंट्स केम टू मी एंड दे सेड दैट सर आई हैव read this book many times but I am unable to answer the questions. ठीक है। मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था. If you have read something, how you are not able to answer the questions? So I think कि फेंक रहा है. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं फेकू टाइप के, प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं. ठीक है। So I thought कि फेंक रहा है. But when many people came, many of the students had the same problem. Then I found, I thought there must be something wrong. Because one people can lie, one person can lie, others definitely, everyone is not lying. Then I actually found out what was the reason. Many of these students, what they're doing, their habit of reading is very bad. They'll keep on reading very fast, very fast. And that is what? That is one reading. No doubt that fast reading is important. But there should be at least one reading which is slow. Where what you are doing, you are reading something and you are making a mental picture out of that. What it actually means, you have to think. ठीक है। अब सोचो कि अगर मैं स्टेटमेंट्स पे रुकता हूं, सेंटेंसेस पे रुकता हूं और सोचता हूं, डू यू थिंक दैट 1 year टाइम विच वी आर टेलिंग फॉर अस, गिविंग टू अस, विल इट बी सफिशिएंट? इट विल बी वेरी चैलेंजिंग. ठीक है। बट देयर इज एक्चुअली अ वर्थ इन इन्वेस्टिंग योर टाइम इन दिस मैनर ऑफ स्टडी. It will be immensely helpful. You have to wait, you read a statement, you think, एक mental picture बनाने की कोशिश करो what it is essentially is trying to say. ठीक है। So if you have done this kind of one reading, you will see कि the necessity of multiple revisions भी कम हो जाते हैं. It will actually get engraved in your mind. ठीक है। So these things you have to do, and if you can do, you will see that
ultimately there is result, and UPSC is not biased with respect to any subject. Geography does give result. Only thing is there should be less confusion, there should be a very clear cut path of what you have to do. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. You might be aware अभी recent times में 2015 I think it was, टीना डाबी was the topper. There was a topper टीना डाबी, ठीक है. And उसके कुछ साल के बाद, what is her name, her sister also got select, रिया डाबी, she also got selected. So कैसे ऐसा हो गया कि दो बच्चे थे और दोनों एक ही घर के फैमिली के सिलेक्ट हो गए. रीजन ये था कि वंस टीना गॉट सेलेक्टेड, द अदर सिस्टर, द यंगर सिस्टर, शी डेवलप्ड द फेथ कि अगर ये पाथ फॉलो करेंगे तो देन व्हाट विल हैपन, आई विल गेट द रिजल्ट. सो हर पाथ वाज वेरी क्लियर. उसने वो सारी चीजें की विच टीना हैड डन, एंड अगेन यू सी शी आल्सो गॉट selected without wasting any attempts. So that is the thing about the clarity of the path which you have to develop. So that is the reason I have today talked a lot on the strategy, mainly on the strategy. This is, if you're joining guidance, this is going to be the strategy which we'll be following, and I have seen that it yields results. Okay. Now if you have any queries you can ask me now. Questions कुछ हैं तो पूछ सकते हो. Otherwise I think it is already 5 o'clock and there is few things which, because you know कि तुम लोगों की क्लास यहाँ पे खत्म नहीं हुआ करेगी डेली. There will be a mapping class, a short mapping class भी होगी. So there will be Krishna sir who will talk about the mapping part. So if you have any queries you can ask me now. किसी को कुछ पूछना है? बहुत अच्छी बात है यार. कुछ नहीं पूछना है, सब भागने के चक्कर में हो. Okay, so from tomorrow we will be starting with the physical geography, climatology. I choose climatology because climatology is something which we all feel around us. ठीक है. जियोमॉर्फोलॉजी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जो कभी लाइफ में देखी नहीं है. क्लाइमेटोलॉजी, व्हाट हैपेंस, द थिंग्स व्हिच वी हैव सीन सराउंडिंग अस. ठीक है. So first part tomorrow we will be starting with the general way in which we will be preparing physical geography. ठीक है. उसमें भी हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे. What should be the way of studying physical geography, then climatology, and we will start with the first topics which are there, that is the introduction to atmosphere and the topics of climate, difference between climate and weather, how atmosphere evolved, composition of atmosphere. So पहले सब general topics they are scheduled for tomorrow. ठीक है. So I'll stop for today. Goodbye. Take care and we'll be meeting tomorrow same time.